Yo, hello everyone. I hope गेम कैप्चर हो रही हो इसमें हो तो रही है. वेलकम टू द स्ट्रीम बतख. मिले तो मुझे भी प्रीमो. सही है भाई. मुचीरो भाई वेलकम टू द स्ट्रीम. कुछ नहीं रखा प्रीमो में सब हुमाया है. कुछ मिल भी नहीं रहा भाई. वेलकम टू द स्ट्रीम दीपिका नेस डीमन वेलकम. तो रो क्यों रहा है बतख. और इस क्या चल रहा है. मोहमाया किसी की नहीं होती है तुम्हारे मन से खेलती बस. आए ये भी सही है. वो के आगे का क्या था डीमन. कैसा ये सिलिग्मा भाई नेम सही करो. चेयर कौन सी चेयर. स्मेल. तबीयत ठीक नहीं क्या. मैं सो के उठा हूँ भाई. मैं सो गया था घर आके. अभी अभी उठा हूँ मैं उठा. मैं देखा अभी 10:30 बज गए. लेट हो गया मैं. चलो आज इसके अब इस खत्म करते भाई. इसका बस एक ही बचा था. इमेजिन करो मैं सो के उठा. मैं सीधा लाइव आ गया. उठ के मैंने कहा छोड़ो भाई बाकी काम लाइव चलते हैं सीधा. ठीक है तो इसके अब इसका अपना बस 1 स्टार बच रहा था तो मैं बस वो अटेम्प्ट करने आया हूँ इसकी आईडी में. उसके बाद अपन अपनी आईडी में चलेंगे. फिर देखते हैं उसमें क्या करना है. ओके मैंने एक मिनट फ़ोन में भी चैट खोल लेता हूँ. ईज अबिस. अबिस तो इजी ही होता है. अबिस तो सारे इजी होते हैं भाई. दिन में स्ट्रीम करके मजा आ गया यार. क्या ही थ्रो किया है आज भाई हम लोगों ने. नहीं मतलब मैंने ठीक खेला था. थ्रो तो स्केच कर गया भाई. क्या करूं कंटिन्यू करूं. पता नहीं कौन सी टीम लगा रखी थी मैंने. और लिग में नाम बदल ले भाई. कब तक ये नाम लेके चलेगा भाई तू. Everyone hold hands. The Temple of Wisdom. Remember, health comes first. ये क्या टीम ले गया Our bond is strong. है. भी हाइपर ब्लूम. लेट्स गो. ये टीम तो जल्दी कर ही देगी. ये तो सोया ही नहीं यार. Silence. A bitter pill to swallow. I'll settle this. नो मोर गोला. Seems like an emergency. Committed to memory. Be sanctified. डीमन डीबीजी डाउनलोड करा. किया क्या तो डाउनलोड. नजदीक ये लान है. नहीं है तो निकाल लियो. नहीं है इसके आईडी में ये लान. अभी आएगी भाई. स्किन ले गई ये लान. अरे हटना यार. कैरेक्टर कैसे स्विच करूं मैं. The doctor will see. रास्ता ही रोक दिया मेरा. Stand with me. Taking a turn for the better. टाइम तो लग गया भाई उतना ही. नहीं होगा. 1 स्टार चला जाएगा. मेरे को टीम फिर चेंज करनी पड़ती. तभी ट्राई करते एक बारी. ये दी रिफ्रेशिंग है मेरी आईडी में ये लान. आओ है ये लान. Letting brave names echo. I'm going in. Hey there.
अभी तो येलान की भी स्किन आ रही है। Boba, get them! You're toast! Bring it! Let the mountain's veins boil! A proper send-up! Let's light it up! Hiya! सिलोरेन का अल्ट काफी कूल है भाई। Coming at सीधा ya! उठा के मार के मुक्का ले थप, गेम खत्म। Adventure nice and spicy! भाई यहाँ पे टाइम लग जाता है यार। Teamwork is strength! Hear the echoes of the valley! अरे यार पहले ई दबाना होता है ना इसका। This मैंने one's डायरेक्ट got कर दिया। your name on it! Hey there! Fire! पुरीना नहीं है, With डिसअपॉइंटिंग। rocks. पुरीना एनएच के भाई। Boba, get them! Eat! टीम बदलनी पड़ेगी यार। क्या टीम रखूं? बस फर्स्ट हाफ थोड़ा जल्दी खींच दो ना, मैं तो हो जाएगा भाई। एस भाई वैलो कैरी करते। वैलो तो आज मैंने खेली है भाई, इतनी खतरनाक। लेट मी सी क्या कर सकते हैं। व्हाट इफ मैं नाविया की टीम पहले ले जाऊं और बाद में मैं दूसरी टीम रख दूं? गोलेम में दिक्कत आएगी ना फिर। या फिर ऐसा नहीं कर लूं मैं? What if I do this? मीनो कैरी, लिग्मा भाई करते हैं कैरी। हाँ आज देखा तब मैंने लिग्मा का कैरी भाई। तेज लेकर कूद रहा था भाई इधर उधर, फिर भर गया। हेलो सिल्वर भाई, कैसे हो? मैं बढ़िया प्रियंक भाई, तुम बताओ। न्यू इमोजी वैन, क्या बताओ यार। न्यू इमोजी के लिए रिस्ट्रिक्शन बड़ी गंदी है यूट्यूब में भाई। मेंबर्स तो मेंबर्स मांगता रहता है भाई। I'm going in! इट्स लाइक हर 10 मेंबर्स पे एक स्लॉट ओपन होता है भाई इमोजीज का। Watch out! Coming at ya! देखते हैं क्या ये टीम जल्दी निपटा पाएगी इसको। Yeah! हमारे हाथ तो थ्रो कर, हमारे साथ भी थ्रो ही करते लिखवा भाई, फिर आए बैगन बोल के निकल जाते। Teamwork is strength! A proper send-off! Submit! Coming at ya! इधर न्यूबिलिटी ठीक था। Watch out! न न ये टीम नहीं चलेगी। डबल हाइड्रो हाइपर ब्लूम ले जाऊं तो फर्स्ट हाफ में। ये ट्राई करते हैं, चलो। नीचे हमारे नेवले भाई को ले चलते हैं। डाइम एक और मेंबरशिप लिग्मा, थैंक्स ब्रो। ऋतुमणि ये कौन है? कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें मेंबरशिप मिल गई। ये किसको मिल गई? आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता कौन है वो। प्रणव को छोड़ के यूट्यूब किसी को भी मेंबरशिप दे देगा भाई, बस प्रणव को ही देगा। Power of Gugwa! Out of my way! Our bond is strong! This
right now. Gotcha. Let me weave you up. Things are about to get dicey. Stand with me. Grow, grow, grow. This might hurt a little. Make yourselves at home. Committed to memory. Rain outlines your fate. Grow, grow, grow. Here comes the catch. Rain cutter. Committed to memory. Dissipate. आई गेस इस टीम से तो सबसे तेज से कर सकता हूँ ना मैं। इससे ज़्यादा डीपीएस पोटेंशियल तो मुझे नहीं लग रही किसी टीम में। इसके साथ भी उतना ही टाइम लग ही रहा है भाई। No, my sword. ये स्ट्रीम को कीज हो रहा है आधा अधूरा क्यों है? फोन में देखो, अच्छे से दिखेगी तुम्हें स्ट्रीम। As one with wind and cloud. You're toast. Let the mountain's veins boil. The tides beckon. भाई अगर पूरी ना होती ये टीम काफी क्रैक हो सकती थी भाई, शांगलिंग की जगह। Silence. The wind knows me. Out of the frying pan. मर जाओ मर जाओ मर जाओ मर जाओ मर जाओ मर जाओ। Hear the echoes of the valley. Bow your head. Clouds high. The birds call. Be sanctified. Let engraved names echo. Nice and spicy. Eat this. The tides beckon. Settle down. लेट्स गो। 36 स्टार डन हो गया। 36 स्टार बोला था ना, इजी हो भाई, एक ही ट्राई में हो जाएगा 36 स्टार। वंस अगेन 36 स्टार डन। सिल्वर भाई प्लीज नॉर्मल स्ट्रीम कर। चलो ठीक है, कल नॉर्मल स्ट्रीम कर लेंगे। अभी तो ये सेटअप हो गया भाई, इसमें थोड़ा टाइम लगता है करने में सेटअप। हाथ लगता स्क्रॉल हो जाता। 36 स्टार ईज 36 स्टार भाई, ईज। अपनी आईडी में चलते हैं भाई। ऑलराइट, मुझे 1 मिनट आईडी स्विच करने दो। आइयो, मैं तो सेव किया था यार अपना आईडी पासवर्ड, कैसे भूल गया मेरे को ये? यार इससे सही फोन का हिसाब है यार। ए स्किल इशू नहीं, रील्स फेंकने की गंदी आदत है, फिर वो निकल पड़ता है घूमने के लिए भाई। वो एक बार स्क्रॉल होता है बंदा निकल जाता है भाई घूमने के लिए। चलो अब ठीक है। आए, ये डायमंड कहाँ से आ गया? सभी भूल जाते हैं एक दिन। आए, गाइस अगर अभी तक तुमने स्ट्रीम को लाइक नहीं किया तो डबल टैप करके लाइक दबा दो यार स्क्रीन पे। डबल टैप करोगे स्ट्रीम लाइक हो जाएगी अगर तुम फोन पे देख रहे हो तो। और बीस्ट क्या चल रहा है?
आज कोई इवेंट नहीं आया क्या? नो इवेंट, नो लाइफ। क्या दिखा रहा है 20 तू? कंट्रोवर्सी करके आया। आर्लेचिनो वॉन्डर कौन सी कंट्रोवर्सी करके आ गया भाई? आर्लेचिनो तगड़े तेरी 72 to 242 ऑलमोस्ट 2 के अटैक। ग्लैडिएटर बढ़िया। सही है। वॉन्डरर 2 के अटैक, 51 क्रिट रेट, 205 क्रिट डैमेज। क्रायो के साथ यूज करता है क्या? फ्लोइंग प्योरिटी। ओके। हंटर, हंटर पे क्यों बिल्ड कर दिया तूने इसको? ठीक है, चल भी सकता है यार। शिवनाओ पे चलता, हंटर पे भी चले जाएगा नॉर्मल अटैक के लिए। फिर तो सही तेरे क्रिट रेट। पुरीना के साथ, हाँ समझ गया मैं। मेरे को लगा पहले तूने उसमें बिल्ड किया इसके सिग्नेचर सेट में, क्रिट रेट थोड़ा कम रह गया तो क्रायो डाल के क्रिट रेट का बफ लेता होगा। पर ये तो अलग ही सीन है, ये तो अलग ही सीन कर दिया भाई। एक बार किसी स्टैचू ऑफ 7 से क्या, मैंने काफी पायरोकिलस उठा रखे हैं। हाय सिल्लू ब्लो, हेलो नोवा ब्लो। वैसे आपका पुरीना C2 नहीं हुआ था। C2 मेरा ट्राई किया था लेकिन नहीं हुआ भाई। F2P होना, क्या कर सकते हैं। देख रहे हो ये भी पूरा नहीं मेरे पास। ये भी नहीं खोला मैंने वेब पॉइंट अभी तक। यहाँ ट्राइबल वाले पे जाके देखो। आपका सिलोनेन नहीं है, मेरा सिलोनेन। आई डोंट हैव सिलोनेन, नाइदर प्रीमो जेम्स। इंप्रेशन है बस, इंप्रेशन। ये क्या है? हॉट स्प्रिंग ओक्लॉक। बाउंटी करते हैं। ओ ये बढ़िया है भाई। मेरे को लगा किसी एनपीसी को जाके ढूंढना पड़ेगा फिर उसको जाके दूँ। F2P पेन, बट मैं आर्लेचिनो C1 में भी रिजली C1 ट्राई करूँ। ऑल द बेस्ट ब्रो, आई होप तुम्हें तो मिले। Laid bare, wind strider. I will have order. Things are about to get dicey. Fallen leaves, adorn my night! Busted. Gotcha. Here comes the catch. This is order. Solidify.
अभी दे टिक गई। Rise! Busted. Stabilize! Transfixed. Quietly now. Things are about to get dicey. As one with wind and cloud. Easy. वैसे आज फाइनली मेरे आरएलचिनो अब इसमें 250 के प्लस नॉर्मल अटैक मार रहा था वेब। क्या बात है लिग्मा ब्रो, किसी कलवे के लाइव में जाके प्रैंक करना आए। चास्का का किट आपको पता है क्या? नहीं पता मेरे को, बस ये पता है बड़ी सी बंदूक पे बैठ के उड़ती है वो, और कुछ तो है जिस एलिमेंट से इन्फ्यूज करती है उसका डीपीएस बन जाती है वो, बाकी नहीं पता मेरे को। गेम साउंड थोड़ा कम करो। ओके, ज्यादा है क्या गेम साउंड? लो भाई थोड़ा कम कर दिया। उसको झूठ मूठ का बोलना कि एक गोरे ने तुम्हारा भाई, ये बंदा कल ये नाम रख के चला गया कुकू की स्ट्रीम में। कुकू तुम लोगों को पता है इंग्लिश स्ट्रीम्स करते, उसकी ऑडियंस पूरी अमेरिकन है भाई, अमेरिकन कैनेडियन। इसका नाम देख के सब लोग स्कल वाले इमोजी स्पैम करने लग गए। फिर कुकू ने जो सेव किया है ना कि देखो ये वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, इसका मतलब है आईज, आंख, निगाह। इसमें सॉन्ग भी है, निगाहों में देखो मेरी वो है बस गए। खतरनाक ही सेव कर गया भाई कुकू का। Let's have some fun, shall we? Laid bare. Into the wind. The wind knows me. हाइड्रो क्यों स्क्रॉल करा है भाई? Busted. Clouds high. The birds come. Here comes the catch. हाइड्रो से इम्यून लग रही है। लिग्मा ब्रो तुम्हें थोड़ी ना शादी करना है। बॉब वेलकम टू द स्ट्रीम, व्हाट्स अप? नो भाई बैन मिल जाएगा सीधा गया तो। सिल ने डिसोन कर दिया मुझे, बोलते मैं नहीं जानता इसको। स्विंग से मत खाना बैन। ओके बैन नहीं, कुछ और खाऊंगा। क्या खाएगा बॉब भाई? आफ्टर लॉन्ग टाइम बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे। इसमें नहीं लिखा था क्या इम्यून वगैरह किससे किससे नहीं है? जियो पायरोरेस डिक्रीज बड़ी जल्दी पढ़ लिया मैंने, आखिरी बॉस पे आके पढ़ रहा हूँ मैं। I will have order. Solidify. Gotcha. Quietly now. Things are about to get dicey. Fallen leaves. Adorn my.
इजी पीजी। आए फॉन्टेन में क्यों मिल रहा है मेरे को रेपुटेशन रिवॉर्ड? पता नहीं क्या क्या लिखा आ रहा है भाई यहाँ पे। चलो यहाँ का तो मैंने देख लिया ये, और कहाँ कहाँ पे एक ये वाला देख लो, देख रहा हूँ। ये नजदीक भाई, रिट्रीट रिट्रीट, नोवा बंगाल रसगुल्ला। अरे तुम फिर शुरू हो गए। प्रीमो किधर मिलेगा? वही देख रहा हूँ, प्रीमो किधर मिलेगा भाई। मेरे को भी प्रीमो चाहिए, प्रीमो मिल ही नहीं रहा है भाई। अरे मेरे को एक और जने का ट्राई करना था, बस एक बार पूछूं उससे। एमडी कुछ नहीं, आपने कुछ नहीं पढ़ा। प्रीमो पैसे से भी मिलता है भाई। क्या बात कर रहे हो फ्रीजिंग भाई? एक्सक्लेमेशन यूआईडी लिखो। मेरी यूआईडी है ये, भेजो उसमें जल्दी से। ओह ये नहीं करना ना मेरे को। बढ़िया, कुछ नहीं मिला। एक इस क्वेस्ट ही कर लेता हूँ मैं पहले, फिर देखेंगे। सिलाज मजा आया, स्केच बोली हो गया। मजा तो आया भाई। मेरा तो बस चलो -7 हुआ Staring भाई, into my मेरा बस eyes is -7 हुआ भाई। ill-advised. I can't promise you'll like what you see. जब से एलान को C6 किया भाई, किडनी भेजने की हालत में हूँ। अरे C6 कैरेक्टर के मालिक हो तुम? मतलब एक ही किडनी पे जिंदगी चल रही है तुम्हारी? मैं आता, आओ आओ बॉब भाई, आया करो कभी, हम मिस करते हैं आपको। क्या बात है भाई, नोवा भी मिस करता है किसी को? हाय, हेलो एससी गेमिंग भाई। No one's come to पुणे? deliver the ingredients yet. Paimon thought we'd see पुणे क्यों someone स्पैम come हो रहा है flying यहाँ down on पे? a Yunkasaur as soon as we came out. आए भाई, पुणे के आगे तो बोलो। A messenger from the Scions of पुणे the के आगे तो Canopy बोलो wouldn't मेरे be. भाई। No need to look. There isn't anyone on the C6 तो मेरी cliffs. चीची भी है, तो उसके लिए किडनी की थोड़ी ना जरूरत है। you वो there. तो Oh, खराब are you किस्मत the one चाहिए who's उसके लिए। supposed to deliver the ingredients? Ingredients? मैं वो समझ नहीं आया, एक बंदा आया, पुणे पुणे स्पैम किया, चला गया। अच्छा नहीं, टाइम आउट पड़ गया शायद उसको स्पैम करने के लिए बॉट से। Let's go help. और प्रत्युष भाई क्या हाल चाल? रेक्सू, मोना 2। मोना अच्छी कैरेक्टर है। Transfix. आए? Wind strider. दोबारा लड़ाई कर रहे हो ये लोग मेरे से? अभी तो बाउंटी करके आया मैं। Gather. Gotcha. Quietly now. Here comes the catch. Hear the echoes of the valley. All right. मी पैक, That should be it वेलकम for the बैक नोआ भाई। monsters. Yeah, was easier than I thought. और सिले भाई क्या हाल चाल? चार्ट इसके पहले लिखी कोई चार्ट तूने अभी तक? अच्छा हाँ लिखी थी तूने, जो लाइक नहीं करेगा उसको अपने फेवरेट नारी प्यार नहीं करेगी। तू चाहता है मैं ये चीज पिन करूं? भाई पर मेरे को चार्ट में क्यों नहीं दिख रही तेरी चार्ट? उसमें तो दिख गई। ये क्या हो रहा है भाई?
सिल्वी की चार्ट यहाँ पे दिख रही है लॉग्स में, पर वहां नहीं दिख रही चार्ट में। एक बार और देखता हूँ मैं। सिल्वी भाई, आई गेस तुम्हारी चार्ट यूट्यूब वाले हाइड कर दिए भाई, क्योंकि मेरे को चार्ट में दिख ही नहीं रही वाला चार्ट पिन करने के लिए। और रेक्स भाई क्या हाल चाल? मेरे हेड में हार्ट अटैक आ जाएगा, इतना दर्द हो रहा। क्या बात है। डीपीएस जोंगली मस्त है ना, कभी ट्राई किया? Oh, बहुत it also पहले seems किया we're था, in good बहुत luck. पहले। The goods weren't damaged either. फिर मैंने बिल्ड वापस नॉर्मल कर लिया अपना। The goods weren't damaged. Strange. We didn't see any monsters on the way here. Yeah, right. I use this road to deliver हाँ भाई, goods समझ all नहीं आ the रहा। time, नोवा and I've रेक्स never been लैपिस attacked हाय। like this हेलो before. आरसी, व्हाट्स अप? It's the main road in and out of the tribe, so I don't know what happened. Tell Soli if she comes माइग्रेन back. हो रहा है, आपको डॉक्टर से चेक करवा दो। Strange. Look at नहीं तो that. चाय पी के He has देख a ले। Playz gem inscription too. ये क्या इंस्क्रिप्शन है भाई? You should go back to the tribe. It seems like you had quite. I'll carry these bags, and you two can carry the rest. If you say so. Thank you रेक्स, so you were much. right. क्या I बोला guess था today's रेक्स? just a really bad day. That's so weird. Why does वो everyone we सर्च run करो into आप today जो having लिखा trouble मैं, दोनों remembering को stuff? साथ में सर्च करो। I'm not sure. Once you live long, let's bring the ingredients. रिटर्न टू तलाजोलीज। तलाजोली, ये कैसा नाम है? चलो भाई, तलाजोली के घर में। वी वाला बटन कहाँ गया मेरा? ये वाला है ना, ये वी वाला बटन। उड़ के जाऊंगा उसके घर में मैं। फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है आपका? तुम्हें मेरी डीपी दिख रही है ना? मेरे चैनल का आइकन दिख रहा होगा तुम्हें, काफी ऑब्वियस है। इसके अलावा अगर तुम मुझसे पूछो, ये 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 और ये और नीचे की दो रो छोड़ के, और ये नीचे की चोंग्युन से पहले सारे छोड़ के उसके बाद में सारे ठीक लगते भाई मेरे को। अरे और ये इसको तो भूल ही गया था। ये सब मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स है भाई। कहाँ जाना था मुझे? अरे वी दबाना है भाई, क्या बटन दबा रहा हूँ मैं? वी कहाँ है? ये रहा। चलो इसके घर में डकैती करते हैं। सिटलाली कब आएगी? सिटलाली को तो अभी टाइम है यार। अभी तो 5.3 में रूमर्ड है कि आएगी मबुइका के साथ, और सुनने में आ रहे शायद से स्टैंडर्ड जाएगी। सिल्वर चिच्चा के अगेंस्ट जो होगा उसके अगेंस्ट मैं जाऊंगा। बस वीसी में मत जाना। अरे अरे बॉब भाई, मैं आता बाथरूम से। एक पल के नाहिदा पे जा रहा था भाई। Ah, you're finally back. What took you so long? I was मैं तो starting to नहीं गया, worry. ये तुम्हारे दिल के अरमान बाहर आ रहे हैं सोहन भाई। Oh yeah, we ran into some small problems, but चलो आज everything's fine बिल्ड now. कंपेयर करते हैं। देखो मैं बिल्ड कंपेयर नहीं करता भाई, इस गेम में सबकी जर्नी अलग है यार। रिव्यू जरूर कर सकता हूँ मैं All right. As long as everything's okay now. भाई। You इतने all 5 have a स्टार seat. तुम्हें I'll क्यों get the लगता है food अब ready. 36 स्टार It हो रहा है won't take मेरा? long. मैं काफी टाइम से खेल रहा हूँ ना, मुझे ऑलमोस्ट हो गए हैं 3-4 साल, तो बहुत कैरेक्टर्स है। Oh, there's so much tasty food. चलो भाई, मी You're टू वी amazing, टीम Tosoli. स्मेल। They were all pretty simple dishes to make. Don't be shy. आप वे लो। Dig in, लो everyone. स्पेंडर, खाली वेलकिन, वेलकिन ओनली। पहले वेलकिन मैंने लिया था जब मैंने स्ट्रीम स्टार्ट की थी, उसके बाद से मुझे वेलकिन काइंड ऑफ गिफ्ट मिलने लग गए। कोई ना कोई गिरा जाता वेलकिन मेरी आईडी में। Paima will help herself. आखिरी बार मैंने वेलकिन लिया Paima था will have some of this and a
फॉन्टेन के वाले पहले पैच में जब कोकोमी का बैनर आया था ना, सुमेरु खत्म हो रहा था और फॉन्टेन आने वाला था, तब लिया था। उसके बाद से मेरे को गिफ्ट मिल गया था फॉन्टेन आते ही, 1 साल तक। अभी खत्म हुआ है वो पिछले महीने। Oh yeah. Can I get another serving, please? You're done. सिल्वी भाई तो वेल निकला, सिल्वी भाई तो वेल है भाई। Of course. सिल्वर Didn't I चिच्चा say that I नेजुदी chirped the fish फ्रॉस्टी bones? बेस्ट स्ट्रीमर्स, नेजुदी सिल्वर चिच्चा एंड फ्रॉस्टी बेस्ट स्ट्रीमर्स। I'll have थैंक्स just ब्रो। one more fish and leave the Thanks. rest for Nechka. नो ऑफेंस टू माय लिटिल ब्रदर स्केच। It's okay. Just go. Her body is too weak to. Oh no. नीचका I thought she'd already. Injuries caused. But it's okay. Even if she will. The doctor said the doctor also. Huh? डॉक्टर You डॉक्टर know about the well, but the case of nature, the books she loved to read, the flowers she took joy to grow, and the time she spent in this house were all cut off by the abyss. बिल्ड I can never दिखाना be आपका true- नाविया as का, one मेरी नाविया का example, बिल्ड she's a देखना भी good दिखाता kid, हूँ। but बाहर I've आने always तो had यहाँ a से nature really. अब ना, अब वो बोलेगी। So you plan on recreating Nechka's woven scroll all by yourself? ओह अच्छा, तब भी डार्क सर्कल्स हो रखे हैं। लाइफ फोर्स को ट्रेड कर रही है। Or should I say, you've already started reweaving that scroll long ago? The delivery guys. I saw it hanging from his waist, so I asked to borrow it from him. पकड़ी गई। Don't worry, I'll return the inscription to him once we've figured everything out. These things aren't अरे cheap सिल्वी after भाई all. क्या बात है, थैंक्स फॉर द मेंबरशिप ब्रो। अरेना भाई कांग्रेचुलेशंस। When did you know? Yeah, I noticed it back when Blaze Gem inscriptions suddenly became popular among the tribe. It was then that I also noticed that everyone wearing Blaze Gem inscriptions had varying degrees of memory loss. ठीक है, ये जो पहनते उसकी याददाश्त चले जाती है। ऐसे आते जाते मुझे भी कोई दे देता। Traveler, you've picked up on it too, haven't you? गिफ्टिंग कर रहे। Everyone's memory loss. Accessories made using ancient names forging techniques. Huh. For what's only supposed to be a pretty souvenir, this inscription contains a phlogiston engraving with a truly overkill level of complexity. तुम लोगों को पता है फ्लेजिस्टन क्या चीज है? पता है किसी को? मैं आज तक मेंबरशिप नहीं जीता। तुम्हारा गिफ्टिंग ऑप्शन ऑन है? गिफ्टिंग ऑप्शन अगर ऑन है तुम्हारा, और अगर तुम्हारे वो है ब्रांड अकाउंट नहीं है, तो उस अकाउंट में मिलता है मेंबरशिप ऑटोमेटिकली। सोचा था इतना गंदा किस्मत क्यों है मेरा बॉब, मैं रोज जीतती ना। ये गुरुजी का दक्षिणा था जो मैंने इस महीना भेजना भूल गया था। लॉल, अभी पता चला गिफ्ट अलाउ ही नहीं था। बहुत सिंपल है, तुम किसी के भी चैनल पर जाओ, इसका मोनेटाइज हो, ज्वाइन बटन के बाजू में 3 डॉट्स आते हैं, क्लिक, टर्न ऑन गिफ्टिंग The ऑप्शंस। shapes and patterns of these engravings are also identical to आई that अदरक of कौन an ancient name. By making just a few slight adjustments to the layout and connections of the main pattern, you can pretty much qualify this Blaze Gem inscription as a bona fide ancient name. And yet, you've never told anyone about these engravings in the Blaze Gem inscriptions that can be activated at any time. क्या कर रही है ये? Am I right, Auntie? I knew you were a sharp one, Shilone. That's right. I have a way to cure Nechka and restore all her memories. It's actually quite simple. I want to forge an ancient name for Nechka that contains all of her past memories. You're going to make an ancient name for Nechka, but ancient name must be approved by Ob. And the reason they must be approved by the Wyab is because the memories they bear are all stored within the ley lines. Okay. रात को वैलो खेलेगा? हाँ वैलो खेलूंगा मैं, अभी डिनर करूंगा। Extracting those Valor memories from the ley lines requires the Wyab's नाइटमेयर भाई, assistance. तू तो दगाबाज है भाई। बोला कॉम्पी आ रहा हूँ, अभी 2 मिनट में आया ही नहीं वापस ये बंदा कभी। But your plan मेरे को wouldn't तो need you to स्क्रॉल do करने पे any of सिर्फ that, वैलो की, right, बाकी गेम्स Auntie? आ रही वही तो आती हैं स्क्रॉल करने पे। Your Blaze Gem inscriptions will help you complete that part of your plan in the ley lines place. You will use the लेकिन मुझसे inscriptions पूछा to भी form नहीं। a massive memory bank for Nechka. नोवा And the सही ancient names में you're trying चले to गया क्या forge देखने? will क्या be देखने used चला to गया नोवा? extract corresponding memories from the memory bank. खेलेगा तब बता देना, मी तू उठेगी नहीं बाद में, A पता है ये भी memory मेरे को। Wait, और so the कवाई reason क्या all हालचाल? those people were having trouble remembering stuff is because Using other people's memories of नहीं बाद Nechka में? to reconstruct her past?
ये देखो स्केच आ गया This थ्रो is the करने वाला। first time I've heard of such an idea. पता है नाइट में जब हम लोग कॉम्प पे खेल रहे थे, स्केच इतना थ्रो किया बॉटम फ्रैगर बन गया। ये 5 किल इसके, 18 किल मेरे। हार गए हम वो मैच। मेरा -7 हो, इसका -30 हुआ भाई। आप यदि साथ खेल रहे थे तो मेरे को बूस्ट नहीं होना। बूस्ट कौन हो रहा था मेरे भाई? बूस्ट तब होता है जब एक अकेला बंदा बैठा हो 30+ किल पे भाई, और पूरी टीम कुछ ना कर रहे हो, उसमें बस स्केच बूस्ट हो रहा था। 5 किल लेके बैठा था, बाकी सब के कम से कम 16 किल थे भाई। You've seen through my plans, बाकी सब कुछ Shilonen. लोग कर रहे थे You're as भाई। outstanding as ever. तेरे को Far देखना है ना more आईडी को brilliant than मेरे me. करियर में, नहीं तो स्केच के करियर में जाके देख। क्यों जानना है हालचाल? अब तो पूछ लिया भाई। इधर दे दिया करो गिफ्ट जीत के। नेज अब 2 बार हील कर सकती। ओके, तो सेज को बफ मिला है, 2 बार हील का। 5 नोट्स आ गए क्या? I intend to use this method to स्केच collate थ्रो all the नहीं memories करता, related to Nechka वो है ही and allow नूब। her to regain her आई past एम again. बोरॉक, यू आर नॉट बोरॉक। मैंने कुछ नहीं बोला। बोरॉक भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। जल्दी जीतो। हाय Extracting हेलो। memories like that hurt the person हाँ carrying the माइनस Playz gem inscription? माइनस में बूस्ट हुआ है, बहुत बूस्ट हो गया। लॉजिक तो ये बनता है भाई। और रेमोंड भाई क्या हालचाल? गेको बहुत नर्फ हो रहा है नेक्स्ट पैच। नर्फ कहाँ हो रहा है? बैलेंस्ड हो रहा है। उसका वो रिक्लेम करने का टाइम बढ़ गया है भाई, जो उसके जानवर गिर जाते हैं। बाकी तो प्रिटी मच बैलेंस्ड है। उसका वो जो ब्लाइंड है वो तो बफ हो रहा है। ब्लाइंड अब तुम्हारा मैप भी खत्म कर देगा, और ब्लाइंड पहले काइंड ऑफ पार्शियल ब्लाइंड था, थोड़ा दिखता था तुम्हें, अब पूरी विजन जाएगी तुम्हारी पूरी। बाकी एक दो चीजें जो थोड़ा सा टाइम कम कर दिया उसका, वो आई गेस सही है। बैलेंस्ड है काफी गेको। ए स्पुंसर फाइन ब्रो। निमॉन्ड ब्रो नाम ले लो, निमॉन्ड गेमिंग। कौन सा बंडल चाहिए? एस भाई मेरे से पूछ लो यार। इतनी रिच लोग, अब इनके बीच में मैं गरीब क्या ही बोलूं। टेक्स भाई Not at तुम भी all. रिच हो भाई, Every स्पॉन्सर time a करो, Blaze साबित Gem कर दो। inscription extracts memories, the process is under my precise control. That way, गेको there's कितना no भी chance नर्फ of हो बट anyone in the वर्किंग tribe नर्फ getting नहीं कर hurt. पाएंगे। मैंने गेको जस्ट कल ही अनलॉक किया है। हेलो सिल्वर। हेलो नोयर भाई, कैसे हो भाई? स्काई चिल्ड्रन ऑफ द राइट मैंने खेला यार, मेरे को उस गेम का पॉइंट ही नहीं समझता। करना क्या है भाई? इधर से उधर भागो, आत्माओं को आज़ाद करो, फिर भागो। गेम बहुत प्यारी है, पर भाई कोई डायरेक्शन तो, जैसे गेंशिन में क्या आर्कॉन क्वेस्ट है, वर्ल्ड क्वेस्ट है, तुम्हें पता है तुम्हें मॉन्स्टार जाना है, मिशन करना है, लीवे जाना है, मिशन करना है, इनाजुमा जाना है, मिशन करना है, सुमेरु जाना है, मिशन करना है। स्काई चिल्ड्रन में बस भागो, जहां मन है भागो। कोई डायरेक्शन ही नहीं भाई उस गेम में, कहाँ जाना है, किधर जाना है, बस वो स्टार्टिंग में बता देगा, खुद से आइडेंटिफाई करते रहो। फिर स्केच भाई बुरा मत मानो यार, मजाक ही तो है। स्केच बुरा नहीं मानता भाई। स्केच भाई किसी दिन माइनक्राफ्ट भी खेल, वो खेल लेगा वो बंदा, तो सारी चीजें खेलता। लिम्फ में तू कर ट्वर्क, भाग इधर से। पहले बोलती उसको ट्वर्क कर, फिर भाग इधर से। सिल्वर क्लिप देखी? कौन सी क्लिप? चैट, कवाई की चैट। मैंने तुम दोनों को आईडी सेंड किया, तुमने फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड नहीं किया। कवाई तूने मेरी पूरी बात नहीं सुनी थी। बीजीएमआई में अब नहीं खेलता हूँ। उस दिन बता तो रहा था, मेरी पीक गोल्ड 5 गई थी। अब जमाने हो गए खुले हुए बीजीएमआई। लेटेस्ट ओके नरो अभी देखते हैं। नेज़दी मुझे तो बुलाते भी नहीं। अरे नेमॉन्ड भाई थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग ब्रो, वेलकम टू द गैंग। नेज़दी मुझसे तो आप बुलाते भी नहीं वालों में देख। लेकिन मैंने बुलाया था भाई तेरे को। मैं उठा सुबह, सबसे पहले तेरे को मैसेज किया, आजा कॉम्प पे चलते। वो पता लगे हम नहीं जा सकते साथ में कॉपी। लगेगा ही नहीं। रेसिडेंट इविल 7 खेलो भाई, चल जाए मेरे सिस्टम में तो मैं जरूर खेल लो यार। बीजीएमआई में भी स्केल इशू है भाई, स्केल इशू। मैं एफपीएस गेमर नहीं ना। बीजीएमआई में भी स्केल इशू था। बीजीएमआई मैंने बस जब स्टार्टिंग में थी तब खेली थी, गोल्ड 5 तक पीक हुआ, फिर इंटरेस्ट खत्म हो गया उस गेम में। मतलब बैन वगैरह का सीन हो गया उसका, हैकर वगैरह आने लगे, छोड़ दी वो गेम मैंने।
फिर पीसी में वैलो खेली। वैलो इज लाइक माय फर्स्ट एफपीएस, प्रॉपर पीसी वाली। इसके पहले मैंने पीसी पे कोई एफपीएस नहीं खेला। क्या फायदा डिफरेंट गेम खेल के, कोई देखता ही नहीं लाइव पर। अब देखो तो ऑडियंस बिल्ड करने वाली बात है भाई। लाइव स्ट्रीम काम नहीं कर रही तो वीडियो अपलोड करना शुरू कर दे, कुछ ना कुछ तो काम करेगा उसमें। स्केच तो वैसे भी रूम है, मतलब फीनिक्स को देख, फीनिक्स तो वीडियो भी डालता, स्ट्रीम भी करता, उसके वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छे आते हैं। स्केच तो वैसे भी नूब है, पर कोई ना, बस वैलो में 2 किल्स लेके जीता। एक बार नोयर भाई की वीडियो देखते, मैं तो डायरेक्ट चैनल पे जा सकता हूँ ऐसे। मैंने इसका भी सेटअप कर रखा है, देखो मैं तुम लोगों को स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ। अरे थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग ब्रो। वेलकम टू द गैंग। देखते हैं नोयर भाई की क्लिप। न्यूविलेट सिलोनेन 33 से। भाई नोयर भाई तुम्हारा न्यूविलेट तो ऑलरेडी C4 है, उसके साथ सिलोनेन तुमने ले ली। काजुहा भी रखा है, फुरीना भी। शिट मैन। 170 के पर टिक जा रहा है भाई, वो भी तब जब इन बॉस पे रेजिस्टेंस है। मतलब 200 के इजी जाना चाहिए फिर तो ये बाकी बॉसेस पे। ब्रो मुझे इतना टाइम लगा था भाई फर्स्ट हाफ में, वो करने में जान निकल गई भाई। ये नोयर भाई को देखो भाई, मजे मजे में मार रहे भाई, खत्म भी कर दिया। स्पाइडरमैन आएगा, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। क्या देख लिया भाई मैंने। नर भाई तुम्हें आईडी नहीं, तुमने अब इसकी स्ट्रीम देखी थी मेरी? बाकी सब हो गया था, मेरे से फर्स्ट हाफ हो ही नहीं रहा था भाई टाइम पे। नेस की आईडी में भी सेम, इसका ही फर्स्ट हाफ कितना टाइम ले रहा था, तो मुश्किल से आज हुआ है भाई। तेरा कौन सा डिवाइस है भाई? डिस्क्रिप्शन में तुम देख सकते हो, पीसी बिल्ड है मेरा, काफ़ी डिसेंट बोलूँगा मेरा बिल्ड है, मतलब उतना हाई एंड बिल्ड नहीं है, सिंपल सा। फेस रिवील ना करेंगे फिर भी चलेगा, ये 2D मॉडल के साथ सिल्वर चच्चा का वॉइस मस्त होता है। अरे थैंक्स अले भाई। फिर कौन सा गेम खेल रहे थे तुम और स्केच? मैं और स्केच तो बहुत सारे गेम खेल रहे थे। वैलोरेंट खेला हमने, और पीछे वो खेला था कोई अमंग अस लाए थे 3D। अभी तो पीछे हम लोगों ने बहुत वैरायटी गेम्स ट्राई किए भाई। मैं कल सुबह 7 बजे ट्यूशन है और 7 क्वेश्चन लिखना है, बाकी होमवर्क का 8 मार्क्स ईच करूंगा पता नहीं। तो तू अभी भी वैलो में नहीं आने वाला? 16 बंदों में भी इग्नोर हो रहा हूँ? अरे नहीं वो मैं वीडियो देख रहा था ना विकास भाई, तो चैट छुप जाती है उस पर। तेरे कौन सा वैसे मैंने पढ़ लिया था, अभी देख लेते हैं विकास भाई। व्हाट्सअप 16 बंदो सिल मैं भी इधर सॉरी विकास भाई, देख लिया मैंने तुम्हें। बेस्ट रन है इंडिया में। इंडिया में? पूरी दुनिया में बेस्ट होगा भाई, ये तो इतनी जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है। मतलब इतना ये अब इसमें इजी है, पर टाइम कंज्यूमिंग बड़ा है भाई ये, उसको खत्म कर देते जल्दी। हाँ देखी फर्स्ट हाफ स्ट्रगल, ये देखो कैसे हंस रहा है भाई गरीब पे। चचा गिव मी ब्लेसिंग्स। तू क्यों रो रही है? तेरी भी चाट गई है क्या? मतलब में मेरी चैट देख पता चल जाएगा। डूड मैंने ये क्या देख लिया, गलती से स्वाइप हो गया। एक लड़का पीठ करके बैठा था, एक लड़की उसके नेक के साइड का स्कैल्प नील से स्क्रैच कर रही थी और स्क्रीन में देख रही थी, मैं डर गई। 1 मिनट, मतलब बाकी लोग मेरे को बोल रहे हैं कि स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आंटियां दिख रही हैं, और बाकी बंदे बोल रहे हैं स्क्रॉल करने पे स्ट्रीमर्स ही दिख रहे हैं। तेरे को क्या दिख रहा है स्क्रॉल करते ही? इसको साइकोपाथ्स दिख रहे हैं। पता है तुम लोग जो चीज यूट्यूब पे देखते हो ना शॉर्ट्स में, वही रेकमेंड होता है तुम्हें जब तुम स्क्रॉल करते हो। नेस की चार्ट पढ़ो वरना ये इमोजी से पूरी चार्ट भर देगी भाई सुपर सस। हाँ सुपर सस नहीं था वो, कौन सी गेम खेली थी हमने? स्केच नाम क्या था उसका?
प्रोटोकॉल था कुछ, सुपर सस पीसी पे आ गया। सुपर सस मैंने फोन में खेला था, वही अमंग अस है, इसमें तुम बोल सकते हो 3D अमंग अस, मैप भी पूरा वही था। उस गेम की सबसे बुरी बात यह, मैं जब भी वो गेम खेलने जाता भाई, मैं अंग्रेजों बच्चों के साथ मैच हो रहा था बार बार, इतना चिल्लाते भाई बच्चे, मैं गेम उड़ा दिया भाई 1-2 मैच बाद, हटा हुआ खेलना ही नहीं है। दुनिया में बेस्ट तो शायद इस पर होगा, वरना जो भी है के अंदर होगा। अच्छा वो वाला स्ट्रीमर, वो देखा है मैंने, कंटेंट क्रिएटर वेल, सब C6 से बंदे पे। बेस्ट रन मोलानी से है 25 सेकंड शायद, क्या बात है। मैं तो मोलानी से इतना जल्दी बर्न आउट हो, इतने इस किसी भी कैरेक्टर से नहीं होती जल्दी। नजदी आप तो मॉड हो इसलिए भी नहीं पढ़ रहे, इग्नोर करते। अरे हो जाता भाई कभी कभी। मेरे को तो स्ट्रीमर दिख रहे, ये हुई ना बात बतख। हेलो बतख, लिगमा, नोयर भाई, इस भाई और रिवेरी, क्या चल रहा है? लॉकडाउन प्रोटोकॉल, हाँ इस भाई स्ट्रीम विन आए, एस भी स्ट्रीमर है, आए लिगमा भाई। ऐसे ही तू तो स्ट्रीम करता होगा ना, तू तो पबजी का बहुत बड़ा खिलाड़ी है। रिवर भाई ए स्ट्रीम नहीं कर रहा, गेंशिन मैसेज इग्नोर किए। यो नाइट मेयर, तूने नाइट और मेयर अलग क्यों लिखा है भाई? किधर लिगमा भाई? तेरा फोन कौन सा फोन? फोन का क्या करेगा भाई, फोन तो रियल मी का है कोई मेरे सा। मेरे को भी स्ट्रीमर दिखा, ये हुई ना बात। तो जिन लोगों को आंटियां दिख रही है ना स्क्रॉल करने पे, तुम खुद को एक्सपोज कर रहे हो बता के। नोवा भाई ए स्ट्रीम करो। लिगमा भाई मैं इन सब चीजों से आगे निकल चुका हूँ, मतलब एस करता था स्ट्रीम। रबड़ी बड़ी वाली चाट मिस, अभी देख लेते हैं गाइस, अगर और भी किसी की चाट रहेगी तो मुझे बता सकते हो, मैं देख लूंगा। चाट मिस होती थी बहुत ज्यादा तो मेंबरशिप लिया, उसके बाद भी चाट मिस हुई तो मॉड बन गया, उसके बाद भी चाट मिस हो जाती, इमेजिन पांची वॉचिंग पर भी चाट। क्या करूं भाई, गेम खेलते हो ज्यादा फोकस गेम पे हो जाता है। ये मैंने पढ़ ली, स्ट्रीमर था एस। बताओ एस बताया भी नहीं, वैसे मेरे को खुद कनेक्ट कर लेना चाहिए था, एस तो काफी तगड़ा प्लेयर है भाई पबजी का। मेरा बहुत चैट मिस, हाँ तू छोड़। बंकाए क्यों नहीं, बंकाए नहीं है, बंकाया हट गया बहुत पहले स्ट्रीम से, वो कॉपीराइट ले मारे थे उस पर। रीयूज कंटेंट पॉलिसी बड़ी बेकार है यूट्यूब की, मुझे काफ़ी रिडीम्स हटाने पड़े यार, काफ़ी वीडियोस हटाने पड़ी है चैनल से भाई, काफ़ी रिडीम्स हटाने पड़े, काफ़ी चीज़ें बदलनी पड़ी जब से न्यू पॉलिसी आई है। वैमलोवेन अभी तो टाइम है, क्या फ़ायदा, डिफरेंट गेम तो मैंने पढ़ लिया था, अभी टाइम है, अभी पहले मैं डिनर करूँगा, डिनर लेट ही होगा क्योंकि मैं घर ही लेट आया था, फिर मैं सो गया कि which will also soon serve as Nechka's ancient यदि name. अपनी कुंडली पढ़वा लेना फिर, और नीचे all मत of जाओ this कसम yourself से। so slowly? तीन रेक्स भाई, तुम्हारे यूट्यूब में वही आते जो तुम देखते हो। Yes, it was lots and lots of work. It डिस्क्रिप्शन was पे पढ़ा truly है, exhausting. डिस्क्रिप्शन पे बंका Or है। perhaps I've just grown old. हाँ ओल्ड तो दिख रही है तू, डिस्क्रिप्शन में कैसे है भाई? मैंने हटाया नहीं क्या वहां से? लेट मी क्विकली चेक, चेक करके आया भाई मैं अपना शॉप। बंकाए तो हट गया था भाई। रेक्सो को रेक्सो तो बैगन है, रेक्स बैगन है। स्केच भाई आप रियल में डुअलिस्ट खेला करो भाई, मैंने शॉर्ट्स रिकमेंडेशन बंद कर दिस, मेरे को स्वाइप अप करने पे कुछ नहीं आता। झूठ बोल रहा है। मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ रिडीम्स कौन कौन से हैं भाई, देखो अभी करेंटली जो जो रिडीम्स हैं हमारे पास, एक तो यह है आया, एक गंबरे, इमोशनल डैमेज, और ये गूगा गूगा हटो वहां से, ऑस्मांथस वाइन, नूट गाबिमारू, योआइमो, आए बैगन, क्या हो रहा है, बोआ, खट्टी टॉफी, इमोतोरी, उंगा, और ये अकाउंट रिव्यू वाला पेंगुइन। देख रहे हो पेंगुइन लगा रखा है यहाँ पे यार, आता ही नहीं है पेंगुइन, पता नहीं आता क्यों नहीं है भाई ये। देखो पेंगुइन लगा हुआ है यहाँ पे, वही तो। रुको मैं दूसरा लाता हूँ मुझे अकाउंट रिव्यू के लिए।
大丈夫 कोई でしょ दूसरा GIF लाता だ हूँ っ मैं. て君弱いもん गेंशिन ही लिखते हैं भाई. Osmanthus wine. हाँ बजाओ, सारे रिडीम्स बजाओ तुम लोग. कोई तो होगा अजीब सा इमोजी जो काफी अजीब लगे देख के. बैगन कोई भी अजीब सा GIF नहीं है भाई. ये अकाउंट रिव्यू कौन रिडीम मार रहा है भाई? लगाने तो दो मेरे को. ओह ये लगाते हैं. सेव. ये काफी गंदा लग रहा है भाई देखने में, इसलिए मैं इसको डाउनलोड करूंगा. डिल्यूक वाला लगा दो. डिल्यूक ये क्या है? आई गेस 2 बार डाउनलोड कर दिया मैंने. डिल्यूक वाले स्ट्रीमर अलग है भाई. यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये देखो कहाँ तुम लोग फंस गया ऑलरेडी भाई 2 मैं? डिल्यूक वाले स्ट्रीमर्स को जानते हो भाई. एक और डिल्यूक वाला स्ट्रीमर अच्छा लगेगा तुम लोगों को देखने में. आया नहीं भाई. ये देखो टमाटर वाला डाला था, ये डाल देता हूँ. टमाटर वाला रिडीम डाला था भाई मैंने, वो कभी काम ही नहीं किया. एक दिन चला टमाटर, कॉपीराइट क्लेम है, उसे भी हटाना पड़ेगा. बदल दिया अकाउंट रिव्यू. कौन रिडीम मारा था अभी अकाउंट रिव्यू भाई? हिस्ट्री. अरे कॉपीराइट पड़ेगा भाई. आने वाली वेबसाइट पे आ गया मैं गलती से, जहाँ देखता हूँ मैं. भाई अगर आने में अभी चल जाता ना, लग जाती. अभी भी GIF नहीं आ रहा है. हद है भाई. स्ट्रीम लैब्स का इशू है. मेरी एस्ट्रोलॉजर वाली चैट कौन है ये? तो गलत बात है भाई. ये कब का है? आज का ही है. ये तो आज का ही दिख रहा है भाई. कौन सा आने में देखते हो? अभी रिसेंटली मैंने वो देखा था, डीमन स्लेयर का जो न्यू सीजन था, और अभी मैं वो देखने गया था क्लासरूम ऑफ एलाइट, पर मैं भूल गया शुरू करके कि आगे भी देखना होता है. फिर ओशिनोगो का सीजन 2 स्टार्ट कर दिया उसी में. You saw it yourself. I nearly fainted just from being in the वो sun. नया हेलो साइकिल की वो वाला रिडीम लगाओ, भेज दो मेरे को. फीडबैक में डाल के टैग कर दो. मैं भी ये यूज करता. सिल कौन से आने में देखते हो? तुम्हें देखना मैं कौन कौन से देखता हूँ. आई गेस मैं दिखा सकता हूँ, नहीं दिखा सकते स्ट्रीम पे यार. नहीं, वो तो जिस वेबसाइट में मैंने लिस्ट बना रखी थी एनिमे की वेबसाइट ही उड़ गई. मैं दूसरी वेबसाइट पे लिस्ट बना रखी थी पूरी भाई. बहुत सारे एनिमे तो उसमें, इसमें तो लिस्ट ही नहीं है. अटैक भाई बहुत तगड़ा एनिमे यार, पूरा देखा मैंने. अटैक ऑन टाइटन. डेथ नोट तो सबने देखा ही होगा. उसके अलावा मैं थोड़े से वो देखता हूँ साइकोलॉजिकल सस्पेंस वाले. इरेज्ड, समर टाइम रेंडरिंग, स्टाइन्स गेट, और वो पैरासाइट अगर तुम लोगों ने देखी हो तो. प्लैटिनम एंड डेथ परेड अच्छी अच्छी है. मॉन्स्टर शुरू की थी, खत्म नहीं की भाई कभी. वन पीस भी चली रही है, बस वो मैंने अभी रोक दी थी. मतलब वन पीस ने मैंने एक साथ बहुत सारे एपिसोड देख लिए. तो वही होता है ना, जब तुम एक साथ कुछ ज़्यादा देख लो सेम चीज़, तो मन से होता है जाती भाई वो चीज़. वो भी कंटिन्यू करूँगा मैं एक दिन. डेथ नोट हर बिगनर का फर्स्ट. मेरा भी फर्स्ट ही था डेथ नोट. अगर मैं नारुतो ड्रैगन बॉल जी को काउंट ना करूँ, जो मैंने प्रॉपरली खुद से देखा है, डेथ नोट था फर्स्ट. FMA ब्रदरहुड ये नहीं देखा मैंने. और वो कोड जियास मैंने आपको मायता के वाला भेजा था यार, 2 महीने हो गए. तेरे को मैं एक चीज दिखाऊं. उधर ही रुकियो तो अभी दिखाता हूँ तेरे को एक चीज.
बस मैंने डाला नहीं है रिडीम में अभी तक ही, काट के रखा हुआ मैंने उसको डालने के लिए। योर नेम भी देखा है, योर नेम, साइलेंट वॉइस, गर्ल हु लीव थ्रू टाइम, मैंने बहुत ओजी ओजी देख रखे भाई। टावर ऑफ गॉड भी देख रखा है भाई। शाम को सोकर अब उठा हूँ, कि स्लीप साइकिल तो अजीब होती जा रही है। मैं तो रात में भी सो रहा, फिर पता नहीं कैसे शाम में भी सो जा रहा। मैं शाम को आया काम से, मैं सो गया, फिर उठा देख रहा हूँ अभी 10:30 बज रहे, फिर मैं लाइव आ गया भाई। टावर ऑफ गॉड की मान हवा वन पीस पहले, मान हवा नहीं पड़ी जाती भाई। I could collapse tomorrow, or Brain even in rot. the next few moments. But Brain Nature's rot, ancient सही है, name is still सही कह रहे हो far from तुम। completion. ओहायो वाला भी बजाओ, डालो प्लीज। डालूंगा मैं, मेरे को डाल देना चाहिए था मैंडेटरी, मैं दिमाग से भूल जाता हूँ यार। I've solved the issue of storing memories, but I still don't know how to connect Nechka up to this central inscription. डूम देखा है ये तो मैं नाम ही पहली बार देख रहा हूँ भाई। मैं तो तब तक खत्म I've किया, thought you just शुरू किया modify मान your हवा own का सीन। ancient name. I considered it, but चलो this मैं matter आता दो doesn't क्वेश्चन help. लिख It's के of लिख no भाई help लिख। to me, and I don't need its help now. मेरे को ये नहीं है पता है आने में तो कौन सा लिख रहा है। बटूम कैसे पढ़ते हैं इसको? You know the लग price to pay ही for रहा making वही something like होगा this. टेक्स। Yes, I do. But सेव as long काइडेन। otherwise, she won't remember me. When that time comes, she will be left as तुमने she is my गोट देखा है daughter. क्या? गोट एनिमे का नाम है, किस चीज का नाम है ये? Take I'm going to completely. I won't make any क्या तुम promises to जनरल connect बकरी to की बात Nechka कर for रहे me, Auntie. Oh, wait. I've also finished the inscriptions. हो? डोरो हीरो, डोरो देखा है मैंने। डोरो ही I'm डोरो। sorry it took me so long ये to नहीं finish पता। them. Hold on, Auntie. The Traveler and Paimon have never met Nechka before, so you can't draw any memories from them. That wasn't my intention. They're just ordinary gifts. Please, take them. वेपन बैनर पे कितने विशेष लगते हैं सॉफ्ट पिटी हिट करने के लिए? 55 से चांसेस बढ़ जाता है तुम्हारे उसमें काफी, बट आई गेस वेपन बैनर के लिए 65 होती है शायद। अबे रिवर वो अलग वाले की बात कर रहा, लेकिन लगता ही नहीं कि इनकी कुछ लव स्टोरी आगे भी बढ़ेगी। अच्छा तुम किसी उसकी बात कर रहे हो? डोरोरो तो रोमांस, हाँ रोमांस है, जाके देख, What was that noise? मजा आ जाएगा तेरे को भाई। Nechka must have woken up and wants to get out of bed on her own. Sorry, I'll go check on her first. कायदन नो लव ओनली वॉर, वेपन पे Nechka, 65। don't try to get out of bed. लव Just स्टोरी tell तो Mom if मेरी you need भी नहीं anything. बड़ी आगे। डोरोरो नहीं वे डोरो ही डोरो, पता नहीं। You go ahead and take care of Nechka, Auntie. और डोरोरो तो रिवरी को देखना चाहिए भाई, डिप्रेशन से भरा हुआ है आने में। Let's go, Traveler and Paimon. There are a few things I want to tell you. Let's head back to the tribe first. There are some things I need to get from my workshop. Disassembling the central inscription? It's not going to be easy. ओ जमीन के अंदर जाना पड़ेगा। सालों पहले देखा था रिवर। You two can wait outside for a moment. I just need to go in and grab something. The workshop is a little messy. Oh, yeah, that's not really what I mean. It's not the mess. It's just that the workshop is cluttered with way too much stuff. Books, files, and even
ancient texts I got from the Masters of the Nightwind. Everything's piled up to the ceiling. You probably won't know where to step once you're inside. Kachina suffered quite an unfortunate series of events the last time she went inside. Well, I suppose it was my fault. After entering the workshop, she was shocked to find herself face to face with a massive woven scroll from the Masters of the Nightwind. Then she turned around and knocked over a huge stack of fortune blueprints. ये लान बिल्ड कैसे है? She tried to step out the way, but tripped on a poster tube that was behind her, and then boom! The forging blueprints came crashing down right onto her head. कोई नहीं, वो तो उसको वैसे ही मरने की आदत है. Oh no! She's lucky I noticed in time. I found Kachina in a daze and managed to save her before an entire set of the history of the Children of Echoes was about to bury her. Ever since then, Kachina always waits outside the door and doesn't dare take a step in whenever she comes to see me. Yeah, you're an artisan and craftswoman after all. We thought there would be weapons and armor hanging all up, but it seems more like a library than... Well, my primary work is forging ancient names, which is much trickier than making swords and tools. Aside from the necessary craftsmanship, I also need to consult many ancient texts. मैं तो डीमन स्लेयर द मुगेन ट्रेन देखता हूँ और मुझे तो कोई जीरो की याद आती है भाई. क्या बात है? ससांटी हाय, तू क्या देख रही है YouTube You पे? probably already know that each ancient name represents a certain spirit, behind which are countless related stories to support it. In other words, the essence of an ancient name is न्यू the इवेंट के physical टाइम पे कोई और manifestation स्पेक of a डाउनलोड कर certain लो, सिर्फ spiritual पाइमॉन realm. साइनो के लाइन से. हाँ, जापानीज है इसमें मेरे पास. मैं जापानीज में स्विच कर दूंगा जब नाहिदा का वो इवेंट And आएगा. as a name सब engraver, Zerus when I'm Festival. working on a new ancient name, I'm not only trying to give it a physical, but more importantly, I'm also trying to understand the spirit contained within the name. And to do that, I have to collect as many related... But, as you might know, people tend to add a lot of extraneous details when it comes to... For stories that have been clearly exaggerated or altered, I must gather other related stories and information as cross-references. This way, I can filter out all the absurd and exaggerated details and restore the person's life to it. Only in true stories can you find the authentic spirit. And this is the only way. We've heard about the concept behind ancient... Well, no matter how powerful ancient names could be, they would never be able to suddenly turn into a blade or allow you to smash through an entire cliff. And it's just a form of spiritual power that's, well, from the moment you appeared in this world, and that person, it may feel names or blessings for the future from people standing in the past. Hello, Black Tiger भाई, क्या हाल चाल भाई? बड़े टाइम बाद दिख रहे हो तुम. With this blessing, people will become more confident as they walk into their future. Oh, Paimon gets that. If you're alone when you're walking in the dark, it's easy to get scared and tired quickly. ठीक है, ये क्या But knowledge if है भाई? someone else is walking with you, then it won't be nearly इस as क्वेस्ट में scary. कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा The यार? traveler always... चले ही जा रहा है ये तो. Oh, Paimon sure many wish they could be in your shoes, traveler. Paimon's always flying. Of course it gets tiring. But we're getting off topic. We can talk about that later. Anyway, this is what Plasoli told me when I was training as a name engraver. And to be honest, I've only understood 20% of what she said at most. I've never been able to figure out the... But doesn't that mean you basically don't get it? Well, that's not entirely true. Monty and I have at least come to a consensus on the most important thing. Ugh, you know, I am sick of talking. We can talk about all of this later. Please, wait a moment while I grab my things. और दिन सिल्वर टाइम हो गया ब्लो हुआ. ये ले. फिर कुछ गिरा. Did you hear a whole section of something collapsing? It's fine, it's fine. It was just a bunch of very old ancient name records. I've already made copies of them. I kept this set of phlogiston wedges in the back, so it wasn't easy to take out. I had to resort to brute force. Come on, let's go disassemble the central
ठीक है, बस एंशियंट नेम ही फोर्स करना है। अब कहाँ जाना है? वो नीचे तो नहीं गिरेगी ना? Here we are. This is the place. क्राई मोर। This cliff is सिल्वर pretty भाई high. थोड़ा मोरा दो। What are we going to do here? Are we तुम्हारे gonna मोरा climb कैसे to the खत्म हो very रहे भाई? top इतने and जल्दी? then throw this inscription down the cliff? I'm going to use phlogiston to make an engraving circle on the cliff wall. That will allow me to investigate the internals of the... Now let me see if this thing can even turn on. एक I स्लॉट was नहीं still an जीता 4 apprentice दिन last से। time I used it. क्यों Before जुआ we खेल attempt रहे हो to भाई? engrave the inside कुछ नहीं pattern रखा of भाई an इन सब ancient में। name with phlogiston, we always use this to draw out the engraving diagram on a cliff or open ground. Only after we've confirmed that phlogiston can flow properly through the internal engravings can we start formally working on the small internal engravings of the ancient name. If we want to dismantle the central inscription in a non-destructive manner, we'll have to use this thing. I really don't want to engrave such a large diagram with my bare hands. Oh, so you'll be able लमाओ to see जेट what it looks फ्लर्टिंग। like on जेट the कहाँ फ्लर्ट कर inside रही है? without ruining टीडीएम में Tlasola's एंटी सोशल inscription? गर्ल नाम से कोई है For the most 100% part. लड़का। If it were just an ordinary unfinished ancient name piece, I'd दस just take it पिटी में apart and राइडन pour मिली थी भाई। phlogiston क्या into बात the है? internal 4.3 में हारा engravings था to see उससे। everything. But since it's a central inscription, it मेरे would को be भी better इसका not वेपन to अब जाके destroy मिला the भाई। blessing that Auntie has prepared for इनाजुमा से Nichka. ट्राई कर रहा था, अब मिला भाई। So, Shilonen, does this central inscription fall under the 20% you understand about ancient names? Or the other 80% you don't understand? There's an 80% chance that it's part of the 20%. हैं? Oh, don't worry. As I said, Auntie and I share an understanding of the most important principle, which is names are intrinsically valuable. Okay. Only by having names can things be sorted and categorized. They allow the world to become more Please, orderly and सिल्वर भाई। identifiable. C2 है राइडन या For C0? मेरी तो example, C0 when I है। order ore, I would अगले साल usually say देखेंगे I C2 need का। volcanic crystals of about 35% purity and no more than 3% of impurities. Without specific names, I would only be able to go to the ore merchant and say, I want this and this. No, this isn't it. That one. No, not that one either. Yeah, you see what I mean? Names are a crucial part of how we standardize our workflow. Without names, phew, the work would be impossible. Yes, because forging ancient names is first and foremost a technical job. There's no debating that. As for the question of why it's important, as long as it does not affect your ability to perform your work, you'll gradually understand it as you put the process into practice. तुम लोग दोबारा लुट जाओगे वैसे तो। After all, creating an ancient name is quite the complicated आजकल कहाँ घर process. चलता? मैं तो Well, इतने let दूंगा me भाई। break it down even further. We're not in the tribe right now anyway. Essentially, by forging ancient name, giving someone a name is a subjective expression. You just by giving someone a nickname is a if ancient name. So the best I can do is gather all the information I could. Even a minor mistake in the process could cause people to misunderstand the nickname. For a name engraver such as myself, such mistakes would be considered a major blunder. Paimon isn't trying to come up with a nickname for Shilonen. Besides, all of Paimon's nicknames have been very descriptive. Everyone can remember. Phew. Now I'm curious. Why don't you, come up? Of course. This is also my line of work, you know. A nickname? क्या nickname रखेगी? Shilonen. Well, she uses phlogiston to forge weapons and make names for others. Smith? हग दी पायमोन भाई। Yeah, not bad, and quite fitting too. I'll remember it. But, you should keep observing my work, Paimon. Maybe you'll come up with an even better nickname. Right, okay. Time to make like a smith and पायमोन start नेगेटिव हो रहा। smithing. नेगेटिव। Watch closely. नेगेटिव भी नहीं, नेगेटिव। क्या करना है?
adjust the inclination by 2 degrees. Stop. The error margin is within an acceptable amount, but I'll extend the inscription link a little more just to be safe. ये होती है character के marketing भाई. I'll leave some space here. When the linked engravings are activated, the inscriptions here will overlap with each other. Bro. नीचे ऐसे उतरती है ये. And there. That should complete the flow. मस्त character है भाई, ये कुछ भी बोलो. Amazing, Shilonen! You were running all over that cliff as if it was flat ground! Is that the power of children's of echoes? Oh no, it doesn't have anything to do with my tribe. It's just the phlogiston adhesive I have on my shoes. But after all that running around, I'll have to infuse them with more phlogiston again. I should prepare a spare supply of phlogiston to bring with me next time. Don't tell me you're actually already covered head to toe in work. More or less, yeah. I usually have at least the key equipment on hand. I can show them to you when we next find the time, but let's get to work first. भाई ओनो के सिनेरियो है कि पायरो आर्कॉन लॉसेस लाइक आपेटानो बोथ आर ऑन द ग्राउंड सडनली राइडन कम्स विद मोसुनो तो ताची भाई अगर हो जाए ना ऐसा मावोइका वर्सेस राइडन मजा आ जाए पर होगा नहीं. See. Start with anchor 1 and पहाड़ पे activate रोलर it with स्केट्स. density 3 phlogiston. Phlogiston OP. Whoa! A super huge diagram just appeared! Tlasoli's central inscription is even floating! ये क्या काला जादू कर रही है? काला जादू completed. After some time, the blast of phlogiston ceases and the central inscription returns to sit on in hand. So are you done checking the inscription, Shilonen? How does it look? I didn't find any anomalies in the phlogiston engraving. All the adjustments are indeed based on ancient name engraving techniques. That means we can help Tlasoli and Nichka now, right? Well, probably, but I have good news and bad news. Oh, but I'm also just going to go ahead and share both, so it's not like... Paimon will cover her ears after the good news. Well, even if you cover your ears, the issue will still continue to exist. But, what are your thoughts on absorbing memories? It's necessary to save Nechka. Yeah. Well, sounds like something you'd say. But if you ask me, there's a problem with what on... It's, hard to control the absorption of memories. Technically speaking, this type of inscription has the power to do far more than absorb memories related to a single person. Okay. Raiden versus Capitano, where Raiden cooks Capitano. उसमें मजा आएगा. By herself, Auntie can't handle उसके लिए that level Capitano of का scope एजेंडा of बचना work, but चाहिए. if she has Accomplices? You make Well, here's the good news. Yes, this Blaze Gem inscription would be the perfect tool to commit crimes, but we haven't found any accomplices. From a purely objective standpoint, we can consider that possibility as yet to be confirmed for now. The bad news is, there's still an underlying problem with this Blaze Gem inscription that cannot be ignored. I believe I've mentioned this before. Ancient names operate with the help of the Wyab, granting them the power to read information kept in the ley line. In this process, the Wyab actually function like relays, helping the ancient name bearer sense the information from within the ley lines. If you remove the Wyab from the process and don't use any tools, then trying to scoop up a specific grain of sand from... Exactly. Anyone who attempts to do so will likely lose most of their cognitive function or become a babbling madman who talks to themselves all day long. Now, let's consider the memories that Auntie has gathered as the ley line, and Nechka as the only ancient name bearer of this ley line. There's no way Auntie would let Nechka plunge into the river of memories without any tools. She'd only be overwhelmed by the search, and considering that Nechka has forgotten all of her past,
she'll be unable to work on her own to accurately find the correct. Only Aunt Tlisoli can help her filter the correct memories of her past. So, if my hypothesis is correct, Auntie is actually planning on turning herself into Nechka's Wyab to help her extract the corresponding memories in the different situations she may face. भाई ये तो पूरा क्रैश कोर्स करा रही है भाई तो मेरे को क्यों पॉइंट्स दे रहा है In an ideal world, this would be perfectly fine, as long as every extracted memory is correct. And I also believe that there won't be any mistakes in everything that Auntie remembers about Nechka. But Auntie is not a Wyab. Her body won't be able to handle the load for long. So at any moment she might just I see this is the problem that we can't ignore. How can we solve this problem? No matter how we try, Tlasoli will... Names are blessings for the future from people standing in the past. तो आगे अच्छा मैंने ऑटो प्ले रोक दिया है I've also made up my mind. आपके रियल लाइफ में भी Come अवतार on, इतने बड़े let's वाले go see Auntie. करेंटली तो हैं कटवाऊंगा मैं जाके रिटर्न टू तलाजॉलीज हाउस आजा 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 शिट ये सही में आ रहा है लिग्मा कॉम्पी प्रो करता है भाई एस वाई ने बुलाया लिग्मा को रोना आया वाया बांटी आ गई Ah, Shilonen. It looks like you've made your decision. Am I right? Yes, here's some research that I've done. You can reference it to modify the way the central inscription operates. I'll also help you continue working on the Blaze gem inscriptions, but I must have complete control over all the inscriptions and the ability to oversee their uses. The memories that can be absorbed by the inscription will be limited solely to Nechka's past. We'll plan a set time frame together from which the memories can be drawn from shortly. Okay. If you attempt to extract any memories beyond this scope, then I'll consider that as committing a criminal act and halt all work related to the central inscription. After the memory bank is constructed, the Blaze gem inscription's absorption functions must be stopped immediately. Only functionalities for outputting memories will be kept. I accept. जाना पड़ेगा मी बुई Thank you, कहाँ जा रहा है Shilonen. लेकिन मैं I really... Auntie, you know I can't stand it when you do this. If you needed my help, you should have just said so. There's no need to beat around the bush like you did. Using technology for ancient names to forge other things without permission is no trivial matter. जेल जाने के लिए भी Yes, रेडी it's a major departure from the technology's intended use, but it's nothing compared to a child who needs help, compared to a name that's about to be lost. But once this is all over, you must come with me to see Pakal and discuss everything that happened. That's fine. I'm willing to accept any punishment for my little Nechka. All right, let's clear off the table and come up with a plan. वाया बांटी जी नहीं मानेंगे भाई I need some time to consider how to let Nechka control the Blaze Gem inscription on her own and extract the memories from her past. Oh, by the way, did you give the book to Nechka? वैसे सिलोनेन reached SS rank in tier list along with New VR Lipurina Kazo जाना ही था इसकी किट काफी ज्यादा अच्छी सपोर्ट How could I just hand her a birthday present that you specially brought for her? I've picked out a box and packaged it up. Wait till her birthday and then bring it to her. It'll be a nice surprise.
No, it's just an old book. There's no need to. गिर गई गिर गई Oh, is Nechka up again? But what was all that noise? It sounded like something broke. नीच का गिरेगी Uh-oh. That's not good. Let's go have a look. मतलब कोई गिर रहा है तो भाग के जाके देखना चाहिए, आपस में बात करनी चाहिए। आवाज कैसी है? क्या कोई गिरी है? Nechka, don't hurt yourself. Shilonen, is that you? You're Nechka? भाई इतना हाइप कर रहे तो मेरे को लगा क्या ही कैरेक्टर होगा, शायद कोई प्लेबल कैरेक्टर निकला How है many NPC times की। have I told you? Don't get out of bed on your own. You were running a Hello, Nechka. Thank you for the book. I've already read it several times. लॉल वो छुपा के रख के भाई बर्थडे में देखिए पढ़ के You've बैठी already है। read it? But didn't Tlasoli package up the book that Shilonen brought? No, she's all mixed up. The one she read isn't from Shilonen. It's one I bought for her before. A few days ago, she told me she wanted a book. I know nothing about these kinds of books, so I had no choice but to go to the tribe and look for a copy. I eventually found one and bought it for her. I put it in her. Soon after, she suddenly developed a fever. I was so busy taking care of her that I क्या forgot जा about रहा the है book भाई ये? and even forgot that she had asked you for a gift. क्या स्टोरी जा रही है बेसर पैर के भाई ये? वैसे सिलोन ये तो ने पढ़ लिया था। रीरन में C4 करूंगा एंड पीकनेस ऑफ क्रैकनेस। भाई कहाँ तक जाके मानोगे नर भाई तुम? Auntie, do you नर know भाई जब which तक देख version न of the लेना book you bought? 500 पर टिक तब तक छोड़ेंगे नहीं नोवेलेट को। Which version? The shopkeeper said it was the one with the perfect ending to the story. Apparently, that's the only one you can find on the market now. Oh, it's all my fault. You wasted your money, and now it won't even be a surprise. Oh. Oh, it's all right. It's just a book. As long as Nechka enjoys it, that's what matters. Duru. Oh, right. Nechka probably doesn't know us. You're Paimon and Mr. Traveler. Mom told me about you. Okay, she knows. C6 Newbie, C4 Silonen, C3 Purina, C2 R5 Kazuha. Oh! नया ड्रैगन Seems like किंग मिल everyone गया है knows who we भाई। are now. पुराना वाला वैसे भी टपक गया था भाई, अब न्यूबलेट बनेगा ड्रैगन किंग। हेलो नेचका। Yeah, Nechka seems to be doing pretty well today, since she's been stuck indoors for the last few days. न्यूबलेट के Why बाद don't आर्ले we पे गोल take her सेट out for a करनी। walk? ताइयम। Let's check your temperature. Seems fever is Take her gone. for a walk. But considering her condition, I don't think she... Oh, don't worry, Auntie. She'll be safe with the Traveler and me. सही We में? won't leave the tribe, and if anything comes up, we'll be sure to find the doctor immediately. Besides, it's her birthday in a few days, and we need to go to the tribe to buy some things. Let's give her a proper celebration. What do you think, Auntie? I promise I'll be good, Mom. Didn't you say before that I need more fresh air? All right. As you wish. मैं काफी रेनली लाइन यूज करता हूँ, but why not? I लॉल। also happen to have a few repaired Playz inscriptions that I need to get back to the tribe. We can go together. पूरा ही क्रैक्ड हो जाएगा न्यूबलेट भाई। Wait for a moment. I'll go get Nechka's water bottle and some towels. Some medicine. Oh, and a parasol. Talk about being prepared. We can camp out with all the It doesn't stuff. hurt to be prepared. Okay, let's go. Please be good now, Nechka. Don't cause any trouble for Shilonen and the others. Oh, you can let me carry these. And don't be a stranger, Nechka. Feel free to tell us anything. And even I was quite a handful from. Yeah! It's not often you get to go out to play, so just have fun. Everything will be fine. Okay. Thanks, everyone. And
Please don't worry, Mom. कुछ तो होने वाला है भाई। I'll be good. नो यार भाई, हटाते हुए सबूत, मिटाते हुए सबूत। इसकी मम्मी गरबर है, गरबर तो है। Let's go look for Eek now. I've had her Blaze Gem inscription for a while now, and I'll finally return it to her today. भाई अब आंटी कुछ तो करने वाली है भाई। मुझे लगा नहीं था इतनी लंबी क्वेस्ट होगी ये वाली, बाकी दोनों तो फर्स्ट तो इतनी जल्दी खत्म हो गई। किधर से जाऊं? अच्छा, जमीन के अंदर जाने। लेट्स गो। Tosoli, what brings you to the tribe today? Oh, and Hato. Nichka too. Oh, she seems to be doing much better now. She's even out and about. I'm sure it won't be long before she'll be playing with Chanil and the— I hope so. Here, Oh, Skip, thank skip, I skip, remember skip. that Nate. I'm sure she'd love. My pleasure. Oh, I can make the jewelry for her. What kind would you like, Nichka? I would like something shaped like an embercore flower would be nice. She was always asking me before to make her an ancient name with a— Mm-hmm, noted. I'll make that up. Sorry, Nichka. It won't be a surprise for you. That's okay. Found it. Sorry to keep you waiting. By the way, Nichka, feel free. Well, I was shocked. Sorry about that. She can hardly contain her curiosity now that she started. She's still too weak to go out whenever she wants, so she begs me every day to help her write letters to. That's how you know. Everything's looking up! Oh, we're just, according to the story, we should be right around... Tequil prayed to the goddess of mountains and fire. Let my brothers... The goddess replied, Then, to turn my blood. Oh, you remembered that whole line? Paimon finished both books but the ending in the older version... Oh, wait! Nichka hasn't read That's not true. You already know the other ending? Hey, what are you all chatting about so happily? भाई कुछ तो चल रहा है भाई, कुछ तो Mom, गलत सीन चल रहा है भाई। Mr. Traveler and I were just talking about the ending of that book. We were just talking about how the bad guy was defeated and everyone returned home safely. It's a really happy ending. That's not other ending she was Aren't talking happy about. endings always nice? But if you already read the whole thing, then what will Mom have to read to you at bedtime? Guess you'll have to go to bed early tonight. But I'll buy भाई you इसकी some शक्ल more देख के अब डर fairy लग रहा है tales यार। next time, okay? अब तो डर लग रहा है इसकी शक्ल देख के। Okay, Mom. It's pretty good quality. I'll be able to give Nichka a beautiful and durable piece of jewelry for her next birthday. But, you know, for now, let's focus on celebrating her upcoming birthday. Where are we headed to next, Auntie? Next, let's visit Apaish Palan. Stay close, Nichka. Don't go too far. Yes, Mom. भाई ऐसे कुछ बड़े फालतू लगते हैं यार, एनपीसी के लिए भगाए जा रहे इधर से उधर। कहाँ जाऊँ अब मैं? Why do my eyebrows keep twitching? सिलोनन की आवाज इतनी मस्त है जेपी और इंग्लिश दोनों में। That means you're about to hit the jackpot, Apaish Palan. भाई इसकी एक परफॉर्मेंस दिखा देना युंजिन जैसी, मजा आ जाए यार। I didn't expect to have two name engravers coming in today. Welcome. What are you looking to buy, Tlazoli? I'll give you a... Whoa! Offering a discount just like that? She was once our name engraver.
and did a lot for the... Thank you for your generosity. Come on, Nechka. Say thank you. Thank you, sir. Oh, so this is Nechka. Tlazol, it looks like you're doing much better now. How about this? Go ahead and... No, that's all right. Mom told me that you've Oh, well, that was for your family. I've never... Oh, no need to stand on ceremony, Auntie. Go ahead and pick something. His drills and small clamps are good quality. I always come here to buy things if I find myself in a pinch. Oh, do you have any child-friendly safety scissors? I remember seeing a few different styles. I have a few in stock, but I put them in the back. Oh, no need to bring them all the way here. Why don't we just go in the back and choose there? It should only take a... I don't know much about that kind of scissors. Why don't you just go... Well, there are too many different designs and varieties of kid scissors. If you don't come and help me choose, I won't be able to pick one that Nechka... Come on, Auntie. It'll only take a moment. And there goes Shalon dragging Tlasoli off to buy more stuff. Oh, what a busy Let's day. just wait for them here. I won't run off. Paimon's favorite? Tequila, of course. In the old version of the story, he was never able to reunite with his family, but he was still really strong and fought as best as He's he a could. brave What about character. you, Nichka? I like... Oh, the one who was possessed by Quatlique, but never forgot his brother Tequila. He was also an amazing character. If it wasn't for his determination, both he and his brother would have been defeated by Quatlique in the final battle. Of course! A story's only interesting if you can really get immersed. Hey, Nechka, why don't we play pretend? You can be Rima, and Paimon will be Tequila, okay? Mr. Traveler, can I... But isn't she the villain? In the old version, she even ate Rima इसको and villain took बनना है. appearance. Ah, right. She read the version with a happy ending. And that one, Quatlique was defeated and the... Well, it doesn't matter. Only the lines at the end were different. My favorite line is... Come here, Nechka. Look at you. You're sweating. भाई ये बार-बार इसको क्यों रोक रही है? Let me wipe your forehead. Now, drink some water. This child. अब You चमका forget ट्रैवलर. everything as soon... We've picked something out for Nechka. A Paishpalan will deliver it to Auntie's house once he... Oh, we were just about to get to the exciting part. Did you leave us with Nechka on purpose? Really? Nechka now has that a Paimon strange thinks look about- on her Let's face. talk later. Just trust me and act normal for now. Oh, we should head to our last stop, Auntie. It's real hot today and we shouldn't let Nechka be in the heat for too long. भाई Right. लग रहा है Let's go बहुत see डिप्रेसिंग Chevin होने and वाली head है. back Any plans on playing new TCG? New TCG मतलब कुछ बदल गया क्या उसमें? पहले काफी मजा आता था भाई TCG में. अब तो इट्स लाइक बहुत सारी चीजें हैं भाई. कीप अप रखना मुश्किल हो गया भाई उसके साथ. I finished repairing your Blaze Gem inscription, Chevin. I've also reinforced... Thank you. How about the volcanic crystal? Was it usable? Yes, thanks for that. You're welcome. I just want to see... Thank you, Miss Chevin. It's fine. Honestly, you're both... I was wondering where you got the ore for such a large-scale काफी Blaze कुछ Gem नहीं आ गया. You can inscription. give it a try बाकी और मर्जी. So मैं you तो must इसलिए be one छोड़ा of था भाई. Auntie's हमेशा कुछ ना accomplices कुछ then. अपडेट आया जा रहा. काफी सारी चीज हो गई थी भाई कीप अप करने के लिए. Oh, Shilonin. We already know what's know. going on. क्या चल रहा है? We are all doing our best for Nechka. You had me worried there. I thought we'd been found out. We'd be in real trouble if Pakal ever got wind of it. To be honest, I won't be able to cover it up for much longer. I've been traveling away from home every few days. And the ore reserves, the last time Pakal came and asked me about it, I could only say that I'd been using up a lot of ore to research new... As for why I had been leaving so often, I said that I had found a new ore vein and wanted to... Sorry. Sure, we can... Miss Chevin, can I go see some of the jewelry over there? You mean Amisha's work? Sure, go ahead. Remember to stay... Paimon wants to go too! We'll go together. Paimon hasn't looked at Natlan's jewelry very... Really? Then Paimon... You haven't bought any jewelry for a while, Auntie. Why don't you pick one out? नई चीज तो ट्राई करने में मजा आता. मस्त पिटाई होगी मेरी. Come on, Nichka! We don't know anything
anything about Natlan's jewelry, so you can help us pick something out. Mr. Traveler, Come here, Nechka. ये बहुत तेज है भाई. Huh? Sorry, Chevin and Shilonen, but it's already getting late. We should be heading back now. भाई कुछ It'll तो be मामला Nechka's खराब birthday है in a भाई. few कुछ तो days, खराब and मामला No है. problem. I'll be sure to bring her some beautiful. Mom, ओ भाई. क्लासिक एशियन You're मॉम getting लोग hot आंखें again. दिखा के मना Here, कर दिया. चल Mom will चुपचाप. carry you. Let's get going. You forget to भाई take care of क्लासिक yourself मॉम once लोग you stop भाई. playing. Let's go back and we'll have a talk. I didn't. Nechka, I never taught you to lie. Sorry, Mom. Nechka's looking at us. My mom feels like something's not right. What should we do? Stay quiet. Let's see what Siloren says. No, Nechka was having so much fun today that she forgot the time. It's not a big deal. Let me help carry her home. I'm worried you would also have to recover if you carry... No, it's fine. I'll carry her. सीधा मुंह पे Let's मना go, कर दिया Nechka. भाई. It's time to go home. सीधा मुंह पे मना कर दिया. खौफ तो है. खौफ तो है. Thank you, everyone, for spending so much time with us today. Please be sure to come to Nechka's birthday party. ये नेच का है भी कि नहीं है? मेरे को डाउट हो रहा है भाई. It's nearly bedtime for... Oh, Auntie, remember to give her the book, that copy of To Kill the Brave I brought. I understand. Really, do you think it's very special to receive a book from you? I'm sure she'll put it somewhere safe. Yeah. Thank. Oh, put it? Well, I've read the story to her many times. No, that won't be a problem, Auntie. Nechka's probably never heard this version of To Kill the Brave. Oh, what's different about this? The majority is about the same, but the ending is different from the one I gave her is the unedited version that was released long before Nechka fell ill. Oh, but I remember you were never very interested. Huh. Well, I was just thinking that if what you said about Nechka's illness is true, detective she show देख रहा हूँ shouldn't be कोई able मैं. to remember anything. So the ending to the original version of To Kill the Brave is also part of the past that she should have forgotten. In other words, if she hasn't recently read the old version of the story, then she shouldn't possibly know the... I don't understand. Why are you so concerned about the ending of this book? Even if she does remember the ending, maybe she snuck out somewhere when I wasn't watching and read the first... Oh, okay, that is a possibility. After all, she does remember things that have happened recently. In which case, yeah, let's go ask around the tribe and see if anyone remembers Nechka reading the book. Oh, There are only a few पकड़ shops लिया. in the tribe that sell books, or चलो we मैं can चलता just ask Thanks for joining Nechka the where stream, she by the read way. it. The booksellers all have inscriptions, so there's a chance that their memories... So, you admit that the inscriptions can affect the tribe's current memories? I was very clear that I would consider that a crime and would stop all work on it. आ रहा हूँ बस खत्म हो गया. डिनर भी करो साथ में. There must be a few more books at home. लगता है रैंडम I do टीममेट्स not काफी wish तगड़े to मिल see रहे your blood be reduced to ash, but I have seen... I beg your pardon? पकड़ी गई. Nechka, where did you read that book? Answer me. Go home, Nechka. Are you disobeying me? You're the one who wrote me the letter, Nechka. You're the one who wanted the book. Only you can speak for yourself. भाई कुछ तो तगड़ा हो रहा भाई इधर. We're listening, Nechka. Right here, right now. Remember my name, brother. As long as you remember me, I will never have left. हैं? Silence. That's the line from the old ending. Nechka, remember? I know everything. Shilonen, help me, please. Something's blocking the door. Get back. वो क्या रहा है भाई? Oh. Shilonen, wait for us. The tunnel is blocked. We can't go in. There might also be traps. हैं? क्या हो गया एकदम से भाई? What are all those things on Nechka's walls?
It seems Auntie put all the extra inscriptions she made Bro. here. If she's trying to finish that ancient name, there's only one place. ये तो साइकोपाथ निकली भाई. बेड के नीचे गड्ढा करके छुप गई. भाई इतनी बोरिंग स्टोरी करके एकदम से ऐसे प्लॉट ले आते भाई ये लोग. जियो कैरेक्टर चाहिए शॉन्गली है. चलो What is this place? Auntie's workshop. It was supposedly closed after she stepped down from her position in the tribe. But it appears that we've all been deceived. Why are there people up ahead? If you're up to shady business, you have to hire shady people to help you. Let's go, don't hesitate! Things are about to get dicey. Bring it! Yep. Solidify! Hey Suraka bro, welcome to the stream. What's up? This challenge is nuts. Easy. Siluan can't walk on rocks, like seriously. Why to yaar? That's so unfair, man. कुछ है यहाँ पे? सिलोरेन वर्थ है क्या? डेफिनेटली वर्थ इट. डेफिनेटली वर्थ इट भाई. डेफिनेटली वर्थ इट. इसका ही वेट करना पड़ेगा यार. अबे 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 यार शिट. With her weapon even more. Yes. मैं कैसे फंस गया भाई यहाँ पे? You can't complete this without her. अबे यार. अब एक टेम्परेरी कैरेक्टर पे मेरे को मेरे परमानेंट रिसोर्सेज यूज करने पड़ेंगे. हेलो. मी गुड. तुम बताओ हर्षित भाई. कर ली तुमने क्वेस्ट?
अबे नहीं नहीं नहीं। One with nature. Crumble! Go on. Into the wind. As one with wind and cloud. अब किधर जाना है? Bring it. Yep. अबे चढ़ जा। कहाँ जाऊं मैं? सर्दियाँ आ रही हैं, अब लड़कियां चाहिए। हीटर ले लो भाई। टू रेड रॉक। रेड रॉक। ठीक से रीड करो भाई, ठीक से तो रीड किया भाई। हीटर ले लो यार, क्या फालतू में धुआं धुआं करोगे हर तरफ। ओ ओके। अब क्या वापस घुस जाऊं इसमें मैं? ये कौन सी वर्कशॉप है भाई जहाँ पे मेरी पजल बना रखी है भाई? ये वाया बांटी बहुत वो है भाई, चिरांद। फाइनली ये गाना क्यों गा रहे हैं कोरस में? Wind knows me. Stabilize! Quietly now. Gotcha. This is order! Let the mountain's veins boil. अबे यार इसका ई करना था ना पहले। Where should we go now? The transport system seems to still be functioning. Let's go look for the controls and get this cart running again. Maybe it can take us further inside. भाई सिलोनेन डोंट बी रेसिस्ट। आर्ले सीनो को भी हील कर। क्या स्टार्ट हुआ? All right, let's keep going. स्किल ऑन करके जंप। बाहर 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 बाहर। टू रेड रॉक इन फ्रंट ऑफ यू, स्किल ऑन करके जंप। हैप्पी वेंसडे टू एवरीवन। तुम्हें भी हैप्पी वेंसडे। डिड यू पुल सिनोनिन? नॉट येट। भाई 10,000 देना, आपको रेड वाला सुपर चैट करना है। ये भी सही है भाई, हम ही से लेके हमको दोगे तुम। अबे उतर जा। एक्स सी दब गया।
लगता है हो गया अब। ये वर्कशॉप है। और सस्ता नशा भाई, क्या हाल चाल? You got here quick. Impressive. बहुत जल्दी आया हूँ मैं, इतना स्ट्रगल कर कर। Nechka's up there! What are you planning to do to her? I never lied to you. All this time, I've only been trying to save my daughter. Even though she's not my daughter yet. But मतलब? once everything is over, she will really become my Nechka. What is she saying? Is she not Nechka? Infusing memory, forgetting the past. So you figured it out. I want to use memories to awaken my Nechka. She has stayed in the Night Kingdom for far too long. She's afraid of the dark भाई ये and पगला cold. गई है भाई। I'm the one who made her stay there alone, so I must bring her back. शिट। एक बार क्या हुआ था जानते हो? एग्जाम हॉल में मेरा दोस्त मेरे पेपर से कॉपी कर रहा था, लेकिन उसने जो पता चला कि मैं अपने पेपर में आंसर नहीं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। What was it? सही में तुम्हें जानने रिजल्ट क्या था उसका? You serious bro? It is obvious. He topped from bottom. Don't worry, Nechka. Mom hasn't forgotten anything. She has always remembered your name. Nechka is already dead? I'm afraid so. Shit, man. Then, who's that girl lying? She's a child from my tribe. Her parents were killed in the same abyss attack. But wouldn't you know it, her birthday is the same as that of my Nechka. Bro. ये बहुत ज्यादा मेस्ड अप है भाई। किसी और का बच्चा उठा के ले आए भाई। मैं फेल हो गया। Understandable. I raised her and took care of her for many years. I thought that taking her in would help me feel better. I was so happy the first time she was willing to call me Mom. But then, I suddenly felt very, very scared. मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ अपने मॉनिटर से। ये पकड़ा गई है भाई। Is she really my child? My child's name is Nechka. It could only be Nechka. साइकोपाथ है ये। How could I be happy? My little Nechka is still waiting for to get her home. As I said, I only want to bring Nechka back, even if it costs me everything. And now, the time has come for me to pay. Shit. As for my useless ancient name, it's finally time to put it to good use. If you're not willing to help me, then you can become the fuel for Nechka's ancient name. Shilonen, you have yet to make a move. I take it you're examining the inscriptions around you. It's no use. I've already set up the Blaze Gem inscriptions, and the engraving diagram has already begun to run. It's all thanks to your ideas. Now, the central inscription will finally become Nechka's ancient name. After Nechka returns, I'll make sure to invite you to her birthday party. Let her go. You're not gonna go up there, are you? Nechka is already dead. We can't let her harm innocent child. Any thoughts on upcoming banner? Brutal, bro. There's a brutal. flaw in this engraving diagram. The weak point is almost First about half to तो काफी activate. mid है, So चांस I'm है on और mark. लेनी है, but second half is very brutal, bro. न्यूवलेट और जोंगली एक साथ। अगर मेरे पास कोई कैरेक्टर नहीं होता ना, मैं न्यूवलेट के ले जाता पहले। न्यूवलेट तगड़ा डीपीएस है। शील्डर तो और भी है गेम में, बट नॉट एज गुड एज जोंगली। बट दोनों ही कैरेक्टर वर्थ बोलेंगे। Don't worry, Nechka. Don't worry. और उसके बाद Mom ही is here. पायरो आर्क होना चाहिए। सोच रहे हो कितना अनफेयर बैनर है। न्यूवलेट जोंगली, फिर डायरेक्ट पायरो आर्क ऑन। 3, Mom will always be with you. 2, Wake up, Nechka. Now. 1. कट सीन आ गया, लेट्स गो। It's alright. It's alright. You'll see Mommy soon.
Shit. Nechka. Let's go. Roller skate to the rescue. बहुत देर हो Keep गई. back. Those are distorted thoughts. And the mists are the thoughts' twisted cries. If you become tainted by them, they will control you, and you'll never be free again. पायरो आर्कॉन वो तो चिटला ले वही ना यार. I don't want medicine. It hurts. It hurts. Why am I alone? Nechka, why? No more medicine. Will you stay with me forever? Please never leave me again. Bro, the chills, man. Telasoli, you're the one who twisted Nechka's name into a shackling prison. It's time for you to hear her true voice. Stone engraved and echoing peaks converge, disperse, in ashes be reborn, for flames born anew, and the blazing dawn. Mommy will be with you. Nechka. Always. And forever. Mommy, I've always been with you. And now you're finally listening to me. The old births the new, as flowers shield the roots, so life ever cycles until we return to the loam. We've known each other a while, but we've never met. You're Nechka? ओ भाई इसका मुंह कैसा हो But गया I है? still don't know your name. My name's Napeka. It really suits you. Napeka. I bless you from the past and wish that every day of your future will be filled with peace and happiness. I saw Nechka and was speaking with her, but now, where did she go? सैड भाई. और उसके बाद मैंने फिर से एग्ज़ाम के लिए ब्रेकफास्ट किया और प्रैक्टिकल में मेरा अच्छा नंबर आया, लेकिन थियरी नहीं हुआ क्योंकि लॉकडाउन लग गया था. लेक्चर ने कहा कि सभी पास हो जाएंगे, लेकिन मैं फिर से फेल हो गया. मतलब जब पूरी क्लास एम ही पास हो रही तो उसमें कोई कैसे फेल हो सकता है? चियोरी वेपन कैन बी यूज्ड ऑन फुरीना. चियोरी का वेपन वो तो डिफेंस देता. फुरीना के लिए आएगी अगर तुम्हारे पास उसका सिग्नेचर वेपन नहीं है तो फेरीमैन इज़ द बेस्ट चॉइस, वो जो फिशिंग करके मिलता है. ब्रेकफास्ट नहीं प्रिपेयर, सॉरी मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी. बोथ हैज़ 88 20% स्किल डैमेज. फेरीमैन बेटर ब्रो ओवरऑल. फुरीना एंड चियोरी वेपन. फुरीना का सिग्नेचर उस पर अच्छा है, पर फेरीमैन इज क्या बोलूँ मैं, काफ़ी सही वेपन है और उसके साथ फुरीना को बिल्ड करना काफ़ी इजी है. Nechka? Nechka? Where are you? Answer, Mummy. Please. बेचारी भाई. Please, Shilonen. You saw her too, didn't you? You saw my little Nechka. I felt her hands and hugged her. I was right, those gray shadows were just a minor mistake. I just need to restart the ritual again. Alright. Have you still not come to your senses, Auntie? What senses? I was not wrong. Nothing about what happened was... She's just a little upset and was trying to ignore me. That child sure knows how to throw a tantrum.
but I understand. Enough, Tlisoli! The person you summoned with the Blaze Gem inscription wasn't the real Nechka at all. You collected memories of Nechka from countless people, but you forgot one thing. Among what you gathered were not only real memories, but also countless emotions. Didn't you realize what kind of emotions people would feel upon seeing Nechka's condition? When people held a dying child's hand, when they felt her faint breath and saw the helplessness in her eyes, when they sensed her body growing cold, what could they feel but abject pain and sorrow? You absorbed those emotions into the Blaze Gem inscriptions and solidified them as a piece. Those gray figures were projections of that past. They could only reproduce the appearance of Nechka in her sickly state. What the real Nechka wished to say was drowned out by those twisted and painful thoughts. I didn't want things to turn out like this. Nechka has always been with you, Auntie. Everything has long been recorded on your ancient name. The one you said was useless. You exhausted every option and sacrificed everything in the hopes of saving your daughter. That is undeniable. But have you forgotten the true meaning of your own ancient name? My ancient name is Untugu. The immovable love between you and Nechka has already been recorded in your ancient name, but you chose to ignore that. Names are blessings from the past to the future. You told me that, Auntie. You gave Nechka her name, her first blessing. But now, you've turned her name into a prison by taking an innocent child captive, and Nechka is everything to me. Without her, I can't end. As for blessings... What blessings have I had since the day she... But I can't say anything. I can't grasp her hand. All I can do is shout her name over and over again until I wake up. Every day, every single day, I've hated myself, and ancient names too. Who knows? Maybe hate would have been the only... You think Nechka would have come to hate you? Auntie, do you still remember the last words Nechka ever said to you? Do you remember what her final words really were? The reason you haven't felt blessed is because you've forgotten the true past. Auntie, you've been wallowing in memories of your imagination and refused to let go of them. A name without a past is nothing but a withered tree with no roots, rotting without a future. It's over, Auntie. It's all over now. Slowly now. Why don't you stay lying down? Oh, on second thought, this might not be the best place to rest. Shilon and Nechka, Napecha can already stand now, so we made our way over. Thank you, Paimon and I'm fine, really. The real Nechka helped me just now, so it doesn't hurt much anymore. That's good. If you became Nechka, then this story would really become the To Kill the Brave. This isn't the place to chat. Come on. But what about Tlisoli? Oh, don't worry. She won't be able to cause... क्या ही स्टोरी है डूड. विच सर्वर यू आर प्लेइंग? एशिया. डैम, इतना हो गया बस 10 मिनट. फाइनली All right, I've locked Auntie in the house with a few ropes. I'll take her to the tribe shortly to be punished for what she did. As for now, we can get away from the house and get some sun.
after dealing with all of that, I'm... She's already planned out everything. Shilonen should... it's still so scary to imagine. Tlasoli wanted to turn her adopted child into Nechka, and she even nearly succeeded. Yeah, she was so cool in the final moments. She went right into action and took control of the situation instantly. Well, it's all thanks to Nepeka's resilience. She never gave up. If it weren't for her bravely trying to get help, then I wouldn't have noticed Auntie's plan so easily. It was thanks to all of you encouraging me. After all, this was already the last idea I could think of. I tried to get the attention of many others who visited before, but they were all either quickly whisked away by Tlasoli, or even if I told them everything, Tlasoli would just blame my illness to cover it up. All she had to do was start to cry, and then the guest would try to comfort her, but completely forget about me. भाई जल्दी खत्म हो जाए यार, मेरे को हो गया मेरा इस गेम से. She would inspect all the letters I sent and any gifts I received. And then, if I didn't comply, she would force me. It would put me to sleep for a few days, and it would be hard for me to remember anything. I would see a lot of weird things while I slept, and the walls around me would start talking. I would be so scared every day. If I wasn't able to get your help... You have us now, Nepeka. If... Yeah. You are already super brave, and you even Shilonen isn't the kind of person who gets distracted easily by crying. She pays attention when someone's talking and doesn't miss a beat. And it was because of your help that I was able to pick up on the details. राइट क्लिक कर दो, जल्दी खत्म हो जाएगा. हाँ जरूर, कुछ नहीं होता भाई राइट क्लिक. Without you, it would have been extremely difficult. पर एक स्किप बटन होना चाहिए था भाई. अब तो हो गई स्टोरी. Tlasoli would certainly be more on guard if I tried to speak with her, and would probably have just kept Nepeka locked up in a room. So we had a part to play too! But where did Tlasoli even get the confidence to try this scheme? When Nechka was alive, surely many tribe members would have tried to help her. Was she not scared that someone would realize that Nepeka wasn't Nechka? That's certainly a possibility. The inscription she created would not only collect information related to Nechka's past, but also actively erase people's memories of Nechka. It's similar to graffiti. If you want to paint something new on a wall that has been painted before, it's possible that I was also one of her targets, which would explain why she was so willing to let me have the central... Whoa! And you still took it? If it were Paimon... Story अच्छी है. Well, you can uncover the truth without taking some risks, right? If I hadn't disassembled the inscription myself, I would have never realized her... So you suspected her from the Oh, no. The most... But now that Anyway, I think we've just about summarized everything and praised each... On Akasha ranking my foreign finally stop. over. क्या बात है? So, Don't what trust Akasha should I ranking, do bro. now? It's You should do whatever you like, of course. 120 No one's going to Primos. But Let's go. everything I know is about Nechka. What she'd like to eat, which flowers she... I'm not her, but I can only be like her. I don't know, Shilonen. I just don't know. Oh, don't worry, Nepeka. The Blaze Gem inscription isn't working anymore. No one... But I no longer remember anything about myself now besides my name. What if I never remember my life and lose all of my past? Leo, इसकी तो खुद की memory चली गई. I'm scared, Shilonen. What should I do? Oh, don't cry, Nepeka. Here, take this. I took some ore from Tlasoli's collection and made this as a mold. A Blaze Gem inscription! You can make them too! Oh, of course not. It's just a pretty piece of stone. Take it. I've engraved your name, Nepeka.
This is your first blessing, the one you received from a pair of people who loved you with all their hearts. It has always protected you and stood over you for all of past. But I don't even remember the names of my parents. No further story, just one more scene. Huh. I won't make any big promises and say everything will return to normal. I'm not sure what kind of future you will face. खत्म हो जा भाई, please. I can only promise that no matter what the future holds, you'll continue to grow and mature. Your name, remember your name. You can do it, Nepeka. Will always be Thank with you you. all. Shilonen, Quest के Paimon, बाद वापस ही and नहीं आएंगे Mr. इधर। Traveler. If you really can't come up with what to do, don't worry. Just relax, and we're from the same tribe after all. If nothing else works, I can always go to the elders and look up your history. And until then, you can stay at my workshop. I can handle another mouth to feed. So you do have a backup plan. Do you think you can find anything about her? Oh, I don't know if the plan will work. I'm not even sure who I should look for. Well, rather than placing our hopes on a plan that relies so heavily on luck, we should just focus on ourselves. Well, anyway, enough about all that for now. Let me take Tlasoli back to the tribe first. Oh gosh. I nearly forgot that we haven't even had dinner yet. Huh? Oh. Oh, good. Let's go. We have a lot of work to do. We have a very busy future ahead of us. खत्म हो जा भाई. Oh, and one more thing. Happy birthday, Nepeka. Finally खत्म. लाओ है प्रीमोस लाओ मेरे. अबे यार. मेरे को लग रहा है हर बार इतना सब अच्छा है, खत्म कर लो खत्म कर लो खत्म कर लो, बट डिनर खत्म हो गया, जमाना हो गया भाई. डिनर खत्म हो गया, प्लेट भी गई मेरी. ये क्वेस्ट खत्म नहीं हुआ अभी तक. मैं भी आना चाह रहा हूँ बतख वैलो. मैं तो ट्रेनिंग रूटीन कर रहा. डाईएम ट्रेनिंग रूटीन. मतलब एम लगेगा तगड़ा वाला आज तो. Let's go. Just 1 minute long. Let's speedrun. Sil, तू क्यों रो रही है? आए तेरे को क्या हुआ? ये सब रोते रोते वापस क्यों आते हैं भाई मेरी चैट में? कुछ को इमोजी मस्त ढूंढना है. मैंने ये योला वाला भाई. Oh, you're here. Everything's been taken care of now. I was just, well, the tribe is what I do, and as for, oh, Skip, and skip, now once skip, all the skip, Blaze skip, Gemons, skip, yeah, skip. that's right. Huh. Skip, skip. Wait, now that I बत्तख रेना से well, carry Nichka नहीं कर रहा. really, she's the, but that's for another time. For now, she should just rest. After all. क्यों भाई बत्तख कैरी क्यों नहीं कर रहा भाई? खत्म. ये क्या फालतू बस इस सीन के लिए हद है भाई. इतने से सीन के लिए वापस लाए ये लोग मेरे को यहाँ पे. रीजन पता नहीं जमानों से क्या पड़ा है. चलो डेलीज भी हो गए. Ad Astra Abyssos. Thank you for और अब 60 मोर. यस ये वाला अचीवमेंट भी मिली होगी ना कुछ. नेवर माइंड. सिलोनेन आ जा भाई. आज तो आ जा सिलोनेन. आज तो आ जा भाई.
कल खेलने के लिए कुछ नहीं है भाई मेरे पास। मुझे लगता नहीं मैं कल गेम ओपन करूंगा भाई गेंशिन। आज ही आजा प्लीज। आए कौन आ रहा है भाई? अबे चल। डोरी आ गई भाई। मेरा हो गया इस गेम से। नोवो इतना लेट, आई डोंट नो कब तक पुलिंग एडिक्शन पर होल्ड कैसे होगा। मत कर होल्ड, कर दे पुल। तेरे पास भी बैकअप प्लान है भाई तगड़ा वाला। व्हाट पिटी 57 ऑन 50-50। आई गेट हर। थोड़ी सी और वर्ल्ड क्वेस्ट कर लूंगा भाई मैं, थोड़ी और वर्ल्ड क्वेस्ट। वो एक्सप्लोरेशन वाला भी लगता करना पड़ेगा। भाई मैं वैलोरेंट जा रहा हूँ। तो गाइस दैट इज इट फॉर गेंशिन स्ट्रीम। जल्दी जल्दी लाइक कर दो अगर तुमने अभी तक लाइक नहीं किया है तो। नो सिल मी F2P, डोंट वेस्ट मनी ऑन गेंशिन। हाँ अभी ये लान की स्किन आ रही है, फिर देखेंगे। तो गाइज अब मैं चलता हूँ। बाकी अगर तुम लोगों को वैलोरेंट की स्ट्रीम देखनी है तो जस्ट स्टे हियर, अभी वैलोरेंट की स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएगी। नहीं तो कल मिलेंगे हम लोग गेंशिन स्ट्रीम में। बाय बाय।